इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में मंगला देवी क्रिकेटर श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स को वापस ला सकती है। 3 रन 6 गेंदें और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि यंग फ्रेंड्स टॉस ಗೆ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ यंग फ्रेंड्स ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ टॉस ಗೆ ಬರಬೇಕು। तो 6 गेंदें 3 रन और प्लस पॉइंट ये है सतीश इस वक्त कि यहाँ पर करना मौजूद है स्ट्राइक पर और यहाँ पर देखते हैं करना क्या करते हैं इस अंतिम ओवर में। Yes, is one more drawback here for Mangala cricketers because they exceeds the time limit, so that they have to bring one fielder inside the ring. But it is not going to matter because they wanted 3 runs. The opposition wanted 3, and already there is a 5 fielders inside the ring, and no problem whatsoever. But Nikhil have to do something magic here. All right, I'm over the wicket. Bounce to Kanna, top edge, opportunity for the fielder. Munna takes the catch. That's what I'm talking about. Why the cricket is game of glorious uncertainty. Munna the catcher, the juicy filters Gopi. Sometimes it's happening, the condition of the game. Maybe the Karna wanted to finish up the things quickly by hitting a big shot, but this is a cricket, Gopi. This is a cricket, and maybe slight a bit, the gate is slightly opened here for Mangala cricketers, because if they're able to get 1 or 2 good deliveries, because a new batter coming into the middle, it's not an easy condition, because of course they need to get 3 runs, but under this condition, for the new batsman, I think the golden opportunity for the bowler to bowl 1 or 2 good deliveries. Exactly सतीश, करना का विकेट गिर चुका है। वेल सेट बैट्समैन यहाँ पर पेविलियन वापस लौटते हैं और यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्ण अवकाश जरूर है कि आने वाले नए बैटर के ऊपर गेंदबाज दबाव डाले। अगर 2 या 3 लगातार डॉट गेंदें फेंकते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर दबाव क्रिएट हो सकता है और देखते हैं किस तरह यहाँ पर नए बल्लेबाज को हैंडल करते हैं इस वक्त मंगला देवी क्रिकेटर्स के ये गेंदबाज जो अंतिम ओवर फेंक रहे हैं। Just a very interesting fact, Gopi. You're just talking about how Nikhil will go and handle this new man. Both the players playing for the same team, Friends Kuttar. The Tyagraj, the batter who came into middle, and the Nikhil is also playing the same team, the Friends Kuttar. Of course, in this particular tournament, they're playing against each other, but they know very well each other. So it's going to be a very interesting contest between Nikhil and Tyagraj, and wait and see how well Tyagraj will go into handle Nikhil. 5 balls remaining. 3 runs required for the victory. Oh, appeal for leg before wicket. Umpire looks like very interesting. Nikhil straight away asking umpire to give the third umpire. Umpire Push Paraj will just stick with this decision because ball is involving the bat. It's a bat involved, so that rightly so umpire is not moved. They stick with the decision. This is what you call the quality of umpiring. 41 for the loss of 5 wicket. 2 required. 4 deliveries remaining. Tyagraj just survived, Gopi, because it is absolutely flum in front of wicket. If bat which is not involved, it's the last moment he's got a bat onto that, and that's why umpire Pushparaj rightly so he is saying that yes, it's a bat involved. It's a 41 for the loss of 5 wicket. Ali Nanya Chimigagi young friends ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. So 2 required. This time, driven that one. Abhilash knows the condition. He knows exactly. He is a very cool customer. The scores are leveled. The scores are leveled. The Gori young boys needed a single run to get the place in the mega final of this Koti Chennaya Trophy 2023. But outstanding performance here for Mangala cricketers. Maybe after if we couldn't able to win this match. But they played a magnificent game of cricket. It's undoubtedly on the heart of cricket lovers. The match is not yet over. At least they're going to try to get to tie this match. They need to bowl 3 golden deliveries if you wanted to tie this match. Nikhil bowling from the far end. Right arm over the wicket to Tyagraj. This time they finished the match in a style. Gentle flick of the legs down to square leg region. They completed a single. Gori young boys entering into the mega final of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023, defeating Mangala Devi cricketers in a close encounter, and absolutely heartbreaking moment, Gopi, Mangala Devi cricketers, because they are almost right in the top in this match, but some mistakes. Congratulations Gori cricketers, and ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. So man of the match, it's a very, very difficult one because everyone is contributed. But leading from the front, the opening batter of Gori Young Boys, Riaz judged as a man of the match for his excellent knock of 12 runs. May I request Riaz, please collect your man of the match award from our chief guest. Congratulations, Gori Young Boys. Hard luck, Mangaladevi cricketers. Really, you played a fantastic game of cricket, undoubtedly, because you are in a very difficult pool and it's not so easy. You have played a good game of cricket, defeated Torpedoes Khana, defeated Friends Gundalike, and gave a very good fight. One more top team, Gori Young Boys. But eventually, the winning and the losing, which is a part of cricket. But I think you are the one, the heart of cricket lovers, and better luck for the next tournament. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೀಗ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಕೂಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಜಯಗಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಕಪ್ತಾನ ಅಶ್ವಿನ್. ಕಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಇದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Yes, thank you very much, my colleague President Satish and Gopi. Welcome back for the second semi-final match of the competition. Really, this is a big bash of Koti Chennaya Trophy 2023. Young friends Urwa for winning the toss and elected to field first. Requesting opening pair of KCCR Khatri, please come over to the middle. And ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ V4 24/7. ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖೇನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅದರ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಇದೇ ಬರುವ 27ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ V4 ಚಾನಲ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 27ನೇ ತಾರೀಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ತರ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಂದುಲೆ ಕಡೆತ ರೆಡ್ ಗೊಬ್ಬಲು ಮಾತ್ರ ಉರ್ದು ಪುನಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 8:30 ಗಂಟೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದೊಟ್ಟುಗು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುರುದ ತಂಡ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಐತ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬುನ ಟೀಮ್ ಓ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೊಂಜರ ಗಂಟೆ ದೌಲಾಯಿ ನಿಖಿಲೆದುರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ದೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನವಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಸರ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಭಾಗದ ದೈತ್ಯ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ದೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು, ದೂರದ ಪುತ್ತೂರು ನಿವಾಸಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಗಳಿಕೆ ಮೊದಲ ಓಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಅವರ ಮೊದಲ ಓಟದೊಂದಿಗೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ, ಓಟಗಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ದಿಷ್ಟಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಆಟಗಾರ ದಿಷ್ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ರವಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸತತವಾದಂತಹ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸಂತು ಬಂಟುವಾಳ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕ ಆಟಗಾರ. ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಡೆಯ ಸಂತು ಬಂಟುವಾಳ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಿಷ್ಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶೈಲಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತ ಡಾಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ. ದಿಷ್ಟಿ ಹಸನ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವೆತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಲವ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. 4 ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಈ ನಡುವೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇತರ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಲಕ 2 ಅನೇಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ. ಈ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಆ ಅವಕಾಶ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿವೆ, 3ಕ್ಕೆ ನಾಲೋಸ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ತಮ್ಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ₹2,00,000 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ₹2,00,000, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ₹1,00,000ವಾಗಲಿದೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. जिस प्रकार ये सेमीफाइनल संख्या दूसरा है, आप जानते हैं कि पिछले मैच पर गोरी यंग बॉयज ने जीतकर फाइनल पर अपना नाम दर्जा कर चुके हैं और उनके सामने कौन सी टीम भिड़ेंगे ये तो निर्णय इस खेल का नतीजे के अनुसार हो जाएगा. फिलहाल बल्लेबाजी करता हुआ इस मैच पर टॉस हारने के बाद केसीसी कद्री, आप जानते हैं कि पिछले मैच पर केसीसी कद्री ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनएम को हराया था और इस बार भी जिनका टीम को जो अपेक्षा थी पहले बल्लेबाजी करने की, उसी अपेक्षा को साथ देते हुए अब पहला बल्लेबाज करते हुए यहां गेंदबाजी में परिवर्तन आए हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से. रिफान, दूसरी ओवर की शुरुआत रिफान कमेंट्री बॉक्स छोर से, और स्ट्राइक पर तैयार है मंजुनाथ. रवि 9 स्ट्राइक पर, पहला पारी है, 3 पर नाबाद. और ये ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद, कोई छेड़छाड़ करने की प्रयास नहीं किए. लग रहा, सोच रहा है कि ये गेंद शायद वाइड हो सकता है, लेकिन जी नहीं, वो सही गेंद रहा. अच्छी शुरुआत है रिफान की ओर से. यंग फ्रेंड्स उर्वा, जो मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रही है, और इस बार एक और उसी ढंग से खेल और नतीजा वही. मंजुनाथ ना खुश है, लेकिन ये गेंद तो सही रहा. एक बहुत ही अनुभव अंपायर है पुष्पराज तथा हरीश पटेल और रोलन पिंटो. इन महाअस्थियों की उपस्थिति में एक खेल आगे बढ़ रहा है. आप जानते हैं कि सुबह की मौसम पर 1980-90 के समय पर तटीय कर्नाटक के अंडरआर्म दुनिया के बेताद बादशाहों का संगम यहां देखें उद्घाटन कार्यक्रम में. उसके बाद लगातार खेल आगे बढ़ रहा है. आप जानते हैं कि 10 टीमों के बीच में ये कोटी चेन्नई ट्रॉफी चल रहा है. आखिर एक टीम अब फाइनल पर अपना नाम दर्जा कर चुके हैं. ये दूसरी सेमीफाइनल कौन सी टीम जीतेंगे, ये तो बड़ा सवाल है. आप जानते हैं कि गोपी और सतीश के बारे में, क्रिकेट के हर एक खिलाड़ी के बारे में जानते हैं कि विशेष ढंग से ये तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहा है कि शायद ये वाइड हो या फिर नहीं. गोपी और सतीश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अंडरआर्म की दुनिया या ओवरआर्म तटीय कर्नाटक में सभी खिलाड़ियों के इतिहास के बारे में जानने जाने वाला कमेंटेटर्स हैं. उनके महान उपस्थिति में उनका साथ माइक बटोरना ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बढ़िया सफलता है. तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहा है. इट इज लीगल डिलीवरी, यस, इट इज नॉट वाइड. जी हां, ये सही गेंद है. इसके परिणाम अंपायर के निर्णय के अनुसार ये खेल आगे बढ़ेंगे. और सही निर्णय रहा कि नजरों से बिल्कुल सही है. और ये जो गेंद लगातार बीट होने के बाद दबाव पर जरूर है मंजुनाथ. हालांकि जिनका जो बैटिंग का तेवर अब तक दिखा नहीं पाए ये तो सच है, लेकिन समय है, 8 ओवर का खेल है, ये दूसरी ओवर चल रहा है. और केसीसी और मंजुनाथ के ऊपर काफी भरोसा रखा है कि जब इनका बल्ला बोलने लगेगा तब से इस खेल पर रोचक यानी इनके प्रदर्शन की शुरुआत होगा. इस बीच अगली गेंद लेकर रियान तैयार है. लगातार 2 डॉट बॉल के बाद रियान मंजुनाथ के लिए. और इस बीच मिडिल स्टंप पर थी ये गेंद, हल्के से खेला, अंदरूनी किनारा लगा. विकेट कीपर संतु आकर गेम को उठा पाते जब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया गया है. दूसरा ओवर चल रहा है.
रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन बगैर किसी नुकसान से। 3 गेंद अब बचे हैं इस ओवर पर। रवि एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। अब देखना है कि रवि क्या कर पाएंगे। पिछले मैच पर रनआउट के रूप में जिनके विकेट गंवाया था रवि ने, लेकिन इस बार जिम्मेदार अपना कंधे पर लेता हुआ आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं केसीसी की ओर से। और ये ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार तो अंपायर फैला दिया अपना हाथ, स्टंप पर जाकर टकरा गया है और वाइड का निर्णय लिया है। और रनआउट के लिए तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहा है। क्या होगा? वाइड तो 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर रनआउट हुआ तो 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पहला विकेट गिर जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारा तीसरा अंपायर रोलैंड सर बताएंगे। हमारा कैमरामैन बिल्कुल सही पोजीशन पर है मैदान के चारों ओर। और इस बार देखना है कि क्या नॉट आउट है। बिल्कुल ये अंपायर का निर्णय, इट इज नॉट आउट। सो 1 रन जरूर मिलेगा जो वाइड के रूप में, लेकिन जी नहीं, इसके साथ एक और रन, वाइड +1, 2 रन मिल जाएगा। नतीजा है कि बल्लेबाज सुरक्षित है। अब तो स्ट्राइक पर फिर से मंजुनाथ। अब तक काफी गेंदें जिन्होंने सामना किया है, ये गेंद लेकर फिर से तैयार रियान। यंग फ्रेंड्स उर्वा इस पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। और ये देखिए कि रिवर्स खेलने के प्रयास किया, और देखना है कि क्या गेंद क्लीन बोल्ड। जी हाँ, ये क्लीन बोल्ड है। गिलिया बिल्कुल बेल्स गिरे हैं नीचे। परिणाम ये पहला विकेट गिरे हैं। जो आउट ऑफ फॉर्म है मंजुनाथ की, वो बरकरार चल रहा है। निराशा है उनके चेहरे पर, लेकिन क्या कर पाएंगे। कुछ दिन ऐसा हो जाता है हर खिलाड़ी की जिंदगी में। सो जी हाँ, मंजुनाथ फिलहाल क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे हैं। पहला विकेट गिरा है जब स्कोर है कुल मिलाकर केवल 6 रन। ಬಂಧುಗಳೇ, ಘನ ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಶಾಸಕರಾಗದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಉರುವದ ಅಂಕಣದ ಬೆಳಕಿನ ರೂವಾರಿಗಳು, ಇನ್ನೇನೋ ಮತ್ತೋರ್ವ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. इस बीच नया बल्लेबाज आए हैं तीसरे पायदान पर, हर्षित जो कप्तान है टीम की, जी नहीं, KCCR कतरी की ओर से तीसरे पायदान पर हर्षित का आगमन. यहां रियान ऑफ स्टंप की काफी बाहर रखा. रियान ने कभी कभी गेंद में ज्यादा तेजी लाने की कोशिश करते हैं. जब तेजी लाते हैं तो कभी कभी नियंत्रण गंवा बैठते हैं. इस वजह से ये दूसरा वाइड काफी तेज गेंद है और इस वजह से ये दूसरा वाइड हम देखें. परिणाम रन संख्या अब 7 पर पहुंच चुके हैं. पहला विकेट मंजुनाथ के रूप में गिरे. क्लीन बोल्ड किया था रियान की गेंद पर पिछली गेंद, इस बार अगली गेंद. और इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, एक और वाइड और तेज रफ्तार से गेंद. लगातार तीसरी वाइड है, लगातार नहीं है लेकिन बिल्कुल 3 वाइड इस ओवर पर हम देखे हैं. और ये अतिरिक्त रूप में ज्यादा रन मिले हैं जहां तक कि बल्ले से ज्यादा. परिणाम 8, 1 विकेट के नुकसान के बाद. मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा V4 मीडिया. बिना रुकावट से शायद तमाम कैमरामैन हो, उनके लिए कोई रस्ट नहीं है, बिल्कुल अपना मेहनती पर जुड़े हैं. ये डेडिकेशन कहते हैं और डेडिकेशन के साथ मेहनत करना भी होता है. और तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहूंगा V4 मीडिया की टेक्नीशियंस, कैमरामैन्स, ऑल द वर्कर्स. इस बीच अगली गेंद और इस बार अंतिम क्षणों में संपर्क बल्ले से हुआ है, कट कर दिया है.
30 तारीख के अंदर गेंद को रोक लिया, जहां तक कि 1 रन मिले हैं। काफी लंबा ओवर चल रहा है, इसके कारण है कि 2-3 वाइड इसमें ओवर पर देखें परिणाम। 34 मिनट का समय ना भूलें। ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇದೀಗ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 8-9 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತ ತಂಡ KCCR ಕದ್ರಿ. ಇನ್ನು 6 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 40 ರಿಂದ 50 ಓಟಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆವರೆಗೆ 50, 55, 60ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ 60ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂದಿನ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ಓಟಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಿಗಿಲು, ಏಕ್ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ആരംഭ. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് പ്രേക്ഷകരെ. എവിടെയും പോകരുത്. 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് ഗോരിയെ നേരിടും എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അല്പസമയത്തിനകം. दाली जी हाँ, दिष्टि हसन यंग फ्रेंड्स उर्वा ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಬೌಲರ್. ಮೊದಲ ಆರಂಭದ ಓವರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಿಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ರವರ ದಾಳಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಆ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂತು ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಿಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲ. ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ 9. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ KCCR. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರವಿ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಹರ್ಷಿತ್. ದಿಷ್ಟಿ ಸತತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿಷ್ಟಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೌಲಿಂಗ್. ಈ ನಡುವೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 2000 ಕೊಡುಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದ 2 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 2000.
ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ರವಿ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಲ್ಲೂ ರನ್ ದಾಹದೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯವರು ತಾನೆದುರಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರವಿ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13ಕ್ಕೆ 1. So 13 after the completion of 3 over, 13 for the loss of 1 wicket. जिस प्रकार ये चौथी ओवर की शुरुआत हो रहा है, 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दर्शकों की संख्या में कमी जरूर नहीं है. अब जानते हैं कि आज रविवार के दिन अब लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर इस प्रतियोगिता बख्शिश वितरण समारंभ के जरिए संपन्न हो जाएगा. अब के समय है रात 9 बजे. गेंदबाजी पर संतोष, और इस बार तो खेला जरूर. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ MLA. ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಈ नड़वे मतोंदु लीगल डिलीवरी, एक बार सही गेंद रहा. अब तक कई बार तीसरा अंपायर का मदद लिया गया है इस पूरी श्रृंखला पर, और सही क्लैरिफिकेशन देखिए V4 मीडिया की बहुत बढ़िया अंपायर के साथ मदद करते हुए. इस बीच ऑफ टाइम के बाहर रखा गेंद का, गेंद और बल्ले पर संपर्क नहीं हो रहा है. मंजुनाथ के बाद हर्षित. इस बीच KCCR लगभग NM के सामने लगता है कि 43 रन बनाए थे बल्लेबाजी करता हुआ. अब कितना रन तक ले पाएंगे, और NM को कम स्कोर बनाकर भी गेंदबाजी में पकड़े थे. और आप जानते हैं कि KCC कदरी के बॉलिंग विभाग बहुत तगड़े हैं. देखिए लगातार डॉट बॉल संतोष यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से लाजवाब गेंदबाजी. एक गेंदबाजी का सफल कहें या फिर बल्लेबाजी का असफल. और इस बार सीधा बल्ले से खेला, वहां खतरा है. आउट हुआ. आखिरकार जो विकेट गिरे हैं हर्षित की रनआउट के जरिए. रन लेना चाहते थे, साथ ना दी रवि, वहां रन की कोई गुंजाइश नहीं रहा. इसके साथ ये दूसरा विकेट बहुत जल्दी में गिरे हैं. अब 14 पर 2, ओवर संख्या 4 चल रहा है. हर्षित का विकेट पतन हो चुके हैं. सो गौरवान्वित ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶಾನವಾಜ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ KMDCಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಅಜ್ಮಾನ್ ಪಂಜಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಹನದ ಕೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ಪಂಜಲದ ಮಿತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೀಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿತ್ರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. V4 ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಖಿಲ ತಾವುಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ V4 ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. यस, 4 ओवर का खेल संपन्न हो चुके हैं. अब आपके सामने सुरीली आवाज के साथ फिर से जुड़ेंगे माननीय गोपी जी. धन्यवाद श्रीमान दिवाकर सर. हमारी खुशनसीबी है कि हमको आपके साथ जो कि माइक बांटने का यहाँ पर मौका मिला है और निस्संदेह ये हमारा सौभाग्य है. तो इस वक्त 5वां ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और गेंद को कट किया. इस वक्त गेंद को ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए, लेकिन एक रन बल्लेबाज को जरूर मिला. तो यहाँ एक रन मिला जरूर. 15 रन तो विकेट के नुकसान पर. हर्षद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया उन्होंने. देखा कि शायद गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार हर्षद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा और संतोष जो विकेट कीपर थे उनको बीट करके गेंद निकली थर्ड मैन पर. और जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. रन्स आर हार्ड टू कम बाय एट द सिचुएशन फॉर द बैट्समैन ऑफ KCCR कद्री. रन इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के. तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अरशद. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई इस बार कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे. सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और रन इस बीच नहीं मिलेगा. क्वाइट क्रिकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, खामोश क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए. और इस बीच रवि पड्डयूर सामना करने के लिए तैयार. और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है KCCR कद्री का, तो रवि पड्डयूर की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि रवि पड्डयूर लंबे इनिंग्स लंबे पारी खेलने की क्षमता रखते हैं और यहाँ पर उनकी उपलब्धि KCCR कतरे के लिए बूट साबित होगी. गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई. फील्डर लॉन्ग पर वाइडिश लॉन्ग पर मौजूद थे. थोड़ा सा दौड़ उन्हें जरूर लगाना पड़ा, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. और स्ट्रोक्स खेलते समय एक हाथ से बल्ला उनका छूट गया था और आखिरकार लेकिन स्ट्रोक को उन्होंने खेला खाली क्षेत्र पर और 2 रन बटोरने में सफल. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को उछाला है डीप मिड विकेट से बाहर या अंदर देखना पड़ेगा. जी हाँ, अंदर इस कैच को लपक लिया गया है और इसी के साथ ये विकेट रवि पड्डयूर का यहाँ पर गिर चुका है. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
तो इस बार गेंद को उछाला था लेकिन काफी ऊंचा और स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और यहां पर रवि पड्डयूर का विकेट का पतन निस्संदेह केसीसीआर कदरी के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। तो इस वक्त इंतजार है नए बल्लेबाज का और नंबर 7 जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पधारते हुए संदीप, जो कि एक और बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं केसीसीआर कदरी की ओर से। ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಾಗಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरह गेंद को लॉफ्ट किया था और किस तरह गेंद को लपका गया एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा, लगभग सीमा रेखा से 1 या 2 इंच अंदर। और इस बीच ये विकेट गिर चुका है और गेंदबाजी संतोष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सिर्फ 19 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ, जहां पर एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों को, क्योंकि उनके पास जो सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है उस लाइनअप को अगर नाप तोल कर देखा जाए तो कम से कम 40 रनों के आंकड़े को यहां पर पार करना होगा यहां पर केसीसीआर के बल्लेबाजों को। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज 24/7 चैनल द्वारा श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और निस्संदेह न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस श्रृंखला का मुआयना इस वक्त करते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट संतोष की गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची है विकेट कीपर संतोष के हाथों में। रन से इस बीच नहीं मिलेगा और तो संतोष इस बार बेहतरीन गेंद तक पहुंचे इस वक्त, जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के लिए गेंद को ड्राइव कर दिया था। 21 रन संतोष एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किए थे, विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था और अपने सफलता के सिलसिले को यहां पर दूसरे ओवर में भी वो बरकरार रखते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑफ कटर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 21 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 3 विकेट के नुकसान पर और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। क्वाइट विकेट इज गोइंग ऑन हियर on the innings of KCCR Kadri. Again lofted. This time I think he's got the distance. Just we have waited and this time I think it just stopped inside the fence brilliantly. इस बार गेंद को उछाला था लेकिन शायद वहां पर बेहतर फील्डिंग किया था। मैं एक्चुअली यहां पर देखना चाहता हूं वहां पर असल में क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और आखिरकार जैसे ही गेंद लैंड हो, गेंद को इस वक्त शायद एक टिप्पा खाई थी गेंद और जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार कर गेंद को ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अंदर की ओर ढकेल दिया इस वक्त फील्डर ने। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने को। जिस तरीके से बल्लेबाज ने संदीप ने स्ट्रोक को उछाला था उससे पहले अंदाजा लगाया गया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई, जस्ट लॉस्ट इट स्पीड अंग्रेजी में कहते हैं, अपने रफ्तार को खोती हुई देखिए किस तरीके से सीमा रेखा के अंदर लैंड हुई थी और आखिरकार जैसे गेंद सीमा रेखा को पार करे उछल कर उस गेंद को अंदर की ओर ढकेल दिया फील्डर ने बेहतर तरीके से। तो 6 ओवर की समाप्ति 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। और जहां तक सवाल है 7वें ओवर का, तो देखते हैं 7वां ओवर इस वक्त कौन से गेंदबाज यहां पर शुरू करते हैं। तो अरशद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, अरशद जो कि इस ऋतु के लिए यंग फ्रेंड्स उर्वा के कप्तान चुने गए हैं और अपने काबिलियत के अनुसार वो खेल यहां पर दिखाते हुए। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए इस बीच दिलीप। तो दिलीप और संदीप क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है एक साझेदारी निभाने की। और देखते हैं वो इस अपने इस
मकसद में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। पहली गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर इस बार रनआउट का खतरा और निशाना इस वक्त लग चुका है, लेकिन एन मौके पर बल्लेबाज क्रीज पर अपना कदम अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रख चुके हैं। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदें अब बाकी, 11 बॉल्स इन ओवरऑल कैलकुलेशन रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो रनों के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष करते हुए बल्लेबाज केसीसीआर कदरी के, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर अरशद तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद हवे में, फील्डर पहुंचे, विकेट कीपर स्वयं संतोष बंटवाल गेंद तक, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कोटी चेन्नैया क्रिकेट ट्रॉफी 2023-2023 की शानदार प्रगति यहां पर करते हुए जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है कोटी चेन्नैया सेवा ब्रिगेड रजिस्टर्ड मंगलूर ने श्रीमान किरण कुमार कोडिकल जो कि कॉर्पोरेटर हैं, इनके सारथ्य में अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर किरण कुमार कोडिकल कॉर्पोरेटर, और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती है इस देर रात में। इस बार दिस टाइम आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट डज, इट्स अ बिग। संदीप के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, जरूरतमंद छक्का कहना पड़ेगा, और संदीप जानते हैं इस वक्त चौके और छक्के उन्हें लगाने, और देखिए इस बार किस तरीके से गेंद को उछाला था, जस्ट मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल ओवर वाइड लॉन्ग ऑन फॉर अ ह्यूज वन। तो छक्के के साथ रन की औसत में कुछ हद तक बढ़ोतरी इस वक्त आई है, 31 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर, और बार इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है किस तरह उन्होंने गेंद को पिक किया था सही स्पॉट पर, बेहतरीन स्ट्रोक, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट अरशद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, संदीप छक्का लगाने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद इस बार उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, परिवर्तन के तौर पर तेज गेंद, पिछले गेंद के मुकाबले 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। दिलीप स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं, अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट पर फील्डर काफी स्क्वायर तैनात, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 34 रनों पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट इन देयर इनिंग्स। और इस बीच अंतिम गेंद लेकर अरशद इस वक्त तैयार, दर्शकों से मैदान अभी भी लगभग भर चुका है, कुल मिलाकर दिन देर रात इस वक्त देर रात की ओर बढ़ती हुई। इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 9:15 रात के बज चुके हैं, और इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल मैच इस श्रृंखला का यहां पर खेला जाता हुआ। इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में गोरी यंग बॉयज का मुकाबला करेगी, और देखते हैं यहां पर कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश प्राप्त करते हैं। फिलहाल अंतिम ओवर बाकी, और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से वो अंतिम ओवर यहां पर शुरू करते हुए गेंदबाज ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವರುಣ್ ಚೌಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರು. ಅತ್ಯಂತ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಇವರಿಗೆ. तो शाह नवाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में, और इस बीच बल्लेबाज संदीप सामना करने के लिए तैयार, और निस्संदेह संदीप के दिमाग में ये सोच विचार इस वक्त चल रहा है कि जो अपना पहला छक्का कुछ पिछले ओवर में लगा चुके हैं, वो उस तरीके के स्ट्रोक को किस तरह वापिस दोहराया जाए इस ओवर में। तो यहाँ पर फील्डिंग में जमावट चलती हुई, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त शाह नवाज गेंदबाजी
शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फ्लड लाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। घने अंधेरे को चीर कर मैदान पर रोशनी गिरती हुई इस मैदान की रौनक को और बढ़ाती हुई इस देर रात में। और इस बीच गेंदबाज शाहनवाज ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी। अंतिम अक्षर में सही निर्णय अंपायर पुष्पराज द्वारा और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 8th एंड लास्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। और इस बीच फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। और इस बीच शाह नवाज अगली गेंद लेकर तैयार दिलीप के लिए, ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, ओवर थ्रो और बैकअप होता हुआ इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर। और इस ओवर थ्रो का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन प्राप्त कर लिया। काफी वाइड थ्रो था, गेंदबाज के पहुंच से बाहर गई थी थ्रो और 2 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कोटी चेन्नैया ट्रॉफी 2023। और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, इंप्रोवाइजेशन, ना गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्कोर सीमा रेखा की और गेंद सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई है बेहतरीन फील्डिंग द्वारा। शायद अरशद वहां पर फील्डर थे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन तरीके से इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को मोड़ दिया था, खूबसूरती के साथ स्वीप करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद पर दौड़ लगाई थी और गेंद को यहाँ पर रोका गया था अपने पैर के जरिए अपनी अंतिम प्रयत्न में। और बेहतरीन एब्सोल्युटली परफेक्ट फील्डिंग विद हिज लेग, परफेक्ट स्टॉप विद हिज लेग इन फैक्ट। और 2 रन इस बीच मिलेगा। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद इस वक्त इंप्रोवाइजेशन किया था रिवर्स शॉट के जरिए, लेकिन सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा वहां पर। बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद और 1 रन के साथ 40 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अब गेंदे बाकी हैं 2, उनके बारे में जस्ट 2 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और इस बीच शाहनवाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। संदीप इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद संदीप के लिए उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, इस बार भी गेंद लगभग लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई और 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार और गेंदबाज शाहनवाज इस वक्त दिलीप के लिए उनकी पारी की अंतिम गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद दिलीप के लिए इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला है, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और दूसरे रन के साथ द स्कोर इज नाउ 43। और सतीश, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगेंस्ट एनएम जप्पू दे स्कोर्ड 43 रन्स एंड दे डिफेंडेड। और यहां पर 43 रन यंग फ्रेंड्स के सामने उन्हें बनाए हैं और लगभग देखा जाए तो एनएम जप्पू और यंग फ्रेंड्स का बैटिंग लाइनअप काफी सशक्त है और एनएम जप्पू के खिलाफ वो सफल रहे थे। 43 रनों के अंदर रोक कर रखा था एनएम जप्पू को। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों को क्या वो रोक कर रख पाएंगे? हालांकि उनका सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है, द स्ट्रेंथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो उस बॉलिंग डिपार्टमेंट के जरिए, सशक्त गेंदबाजी के डिपार्टमेंट के जरिए क्या वो यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों पर रोक लगा पाएंगे? अगर रोक लगा पाते तो किस तरीके की रणनीति, टैक्टिक्स उन्हें अपनानी पड़ेगी गेंदबाजी में? सतीश, Well, Gopi, and a single word I want to say that is the competitive total, isn't it? Just like I'm mentioning about the semi-final, first semi-final, 43, which is scored by Gori, little bit correction, Mangala cricketers, but they fails to depend, isn't it? They fails to depend because of their own mistakes, isn't it? And that's what I'm talking about, Gopi. This is a competitive total. This is a competitive total, and I'm sure that this match will definitely go into be more interesting, and this match turning out to be a nail-biting finish. If the bowlers of KCCR Kadri, they manage to bowl good line and length, and they need to attack the batters of young friends. So just like I mentioned about Gopi, even though young friends are, if you see that young friends are the present team, they're missing lot of players. Even though they're missing lot of players, they are regular players, they're not in the team, but need to appreciate they're having only 2 to 3 experienced players. Of course, Santosh leading from the front, Santosh Japur, and Santosh Bantwal is one more the very good cricketer of the back. I think it's all left to that Ashad even, the captain of the side. That the 3 guys did a great job.
so far for the young friends. I think KCCR Kadri have to target that three players, especially the Arshad, the very destructive batsman. Once he get going, he's definitely going to be a very difficult batsman to tackle for any bowler. At the same time, coming back to Santosh Bantwal, you know that is what is the potential he's got. He's got a record of hitting the fastest 50 in this particular UCG cricket ground, and he's a key player because if he able to get, if he managed to play his natural game in the first tour of the power play, then I think KCCR Kadri definitely they're under pressure. So it's a very important for KCCR Kadri captain that they need to bring the two very good bowlers in the first opening spell, and if you're able to pick one or two wickets quickly, then this match is going to be very interesting and it's going to be anybody's game. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर अरशद बजाल और संतोष बंटवाल इस बार इनफॉर्म बल्लेबाज है, इनफॉर्म खिलाड़ी हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए, और उनको अगर टारगेट करते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर केसीसीआर कद्री की गेंदबाज, तो उनका विकेट जितना जल्दी उखाड़ते हैं उनका उतना केसीसीआर कद्री के लिए बेहतर रहेगा. लेकिन यंग फ्रेंड्स उर्वा दे आर डिपेंडिंग ऑलमोस्ट ऑन अरशद एंड संतोष बंटवाल इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट, तो ज्यादातर उनके ऊपर निर्भर है. तो संतोष बंटवाल और अरशद अगर एक बेहतर पारी खेलते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, तो यहाँ पर परेशानियां केसीसीआर कद्री के लिए पैदा हो सकती है. और अरशद जो कि अंडरआर्म क्रिकेट के अत्यंत विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, संतोष बंटवाल भी कुछ खास कम नहीं है. हालांकि आपने फरमाया फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इस मैदान पर उनका है, 12 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए थे. तो यहाँ पर इन दोनों की बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर निर्भर है कि यंग फ्रेंड्स उर्वा इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. हालांकि दूसरे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर प्रदर्शन देते हैं तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए यहां पर मिसाल बन सकते हैं. तो कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, 43 द टारगेट, 44 द टारगेट in fact, and it's going to be a as far as the victory of this match is concerned, at this situation I must say it's going to be a 50-50 at this situation. Absolutely, I agree with that. The match is evenly poised because of that runs what KCCR Kadri got. Thanks to the innings of the captain of the side, Dilip and Sandeep, they really batted very well in the middle order. It never looks like the KCCR Kadri will going to get that much of runs, but these experienced players, Sandeep and Dilip, the two guys that played very good innings, isn't it? They played a sensible knock. They're just rotating the strike, just waiting for the one opportunity to swing that one. The 1-6 which came from the bat of Sandeep, I think it's a lot more enough. It's a lot more enough for if you bowl well, if you bat well. I think 43 definitely going to be a very good total in this condition. But just like mentioned, we are mentioning about that the potential what these two batters has got. They were talking about Santosh Bantwal and Arshad Bajal, and maybe these two batsmen knows that what the responsibility they got. But looking at the overall, if you look at that. Overall, if you look at this, Gopi, this particular tournament, it is not a batting paradise. You never watched that much of sixes and boundaries. There's no raining in the boundaries and sixes. There's a few boundaries and few sixes. We can see that. That shows the condition is not that much of easy enough for the big hitters. And I think by realizing that factor, the Santosh Bantwal as well as Arshad, maybe they're thinking about they need to play wait and watch game. That's very, very important for young friends to win this match. And wait and see the strategy from both the teams. Yes, umpire Pushparaj saying that it's going to be a start of the innings of young friends Urwa, and young friends Urwa and in the semi-final, and KCCR Kadri also there in the semi-final, and both the teams desperately wanted to be in the final. And Gori young boys, the players, they are silently watching this match. They know that they're saying that which team it's going to be better for them in the big final, and maybe they're having some game plan in the final. The first ball, Santosh Bantwal knows that they're not chasing a big total, and they just started to pick the single by tapping the ball in front of that short silly mid off region. He's up the mark with a single one without loss of any wicket. Santosh Bantwal played a very good innings, a small cameo from his bat in the previous match, and this man, the Sajid, and he's a very good striker of the ball. He misses the first match, I think so. He's a very good striker of the ball. He's got a very good tournament in the previous Sunday. And again, they're going for the big single chance of run out there. Oh my goodness, that score leg fielder has got opportunity here. If you're able to collect the ball neatly, then the opportunity which is created in the non-striker's end. But he misses the ball, and Sajid got his first run. 2 without loss of any wicket. The Sajid, just we are talking about, he's got a good tournament in the YSP trophy, which is played in Awamadapadao, where young friends they grab the place in the semi-final.
And again, Santosh, but too clever in the dedication. That's what I'm talking about, the watching game. And what Santosh Bantwal wanted to implement here, you know exactly that chasing a 43. If you rotate the strike in each and every ball, then this target will going to be very easy for young friends Urwa. But the bowler here, Dilip, the captain of the side, he wanted to get one big, lovely leg cutter in the negation. Absolutely perfect one in the negation, isn't it? Sajid just slight a bit of shuffle across the line of the delivery. He wanted to swing that one on the mid-wicket region. And but quite deliberately, Dilip is shortening the length, isn't it? He's just shortening the length, bowled that away-going delivery and misses the bat of Sajid. Oh, one more beauty. Absolutely identical mirror display of the previous delivery. This is absolutely the Xerox copy of the previous one. That's the same line and same length. And the Sajid wanted the same stroke he wanted to attempt towards the mid-wicket region. He got one fielder in the mid-wicket region. And that's why Dilip is very confident bowling that line. Two dotted delivery will going to create the problem here for the batter. Sajid. One more dotted delivery. Absolutely fantastic. Dilip, the captain of the side. After that, 3 runs in the 3 deliveries, Gopi. 3 dotted deliveries and similar deliveries. The 3, what we are talking about, the 3 deliveries, and I told you the identical mirror display of the previous, and 3 deliveries, the same line and same length, and batsman attempting the same stroke and fails to make a contact with the bat. Exactly, Satish. तीनों बेहतरीन गेंद थे, तीनों सही लेंथ और लाइन के साथ फेंके गए थे और तीनों लेग कटर गेंद थी और अंतिम गेंद थी जो लेग कटर वो परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और इस धीमी गेंद को संतोष समझ नहीं पाए तो 3 गेंदें 3 सिंगल्स और 3 डॉट गेंदें और मैं समझता हूं अगेंस्ट संतोष बंटवाल एंड अरशद बजाल इस वक्त एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में कर चुके हैं दिलीप एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम दिलीप What a great shot. That's what I'm talking about, Gopi. The 43 is a total where we're expecting some great battle, isn't it? The 3 runs in the first over, but it's a long way to go, isn't it? 7 overs remaining. That means the 42 possible delivery remaining, excluding wides and no ball. And out of that 42 deliveries, young friends needed 41 runs to win this match. The match is very, very interesting. As Satish brought into attack from the far end, and wait and see how he will go into ball that second over of the power play. The last over of the power play, and in front of him, Santosh Bantwal. Right arm, over the wicket, bowler's back drive, well fielded by Satish on his follow through. The bowler's back drive, powerfully driven, and quickly reacted by the bowler on his follow through, fields the ball, 1 more dotted delivery. That means consecutive 4 dotted deliveries. 3 in the previous, the first in the second over. The 5, of course, just a 3 on the board. 41 more runs required for the victory. Now ball to ball, which is required, isn't it? 41 balls remaining. 41 runs required for the victory. The match is evenly balanced. Satish, bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Santosh. Went for the reverse sweep. Missed it completely. 5 consecutive dotted deliveries. Have a look at the crowd. Of course, the supporters of KCCR Kadri cheering each and every dot ball by the bowlers. So far, we can see that the bowlers are really dominated in this tournament. They're exploiting the condition very well, especially the bowlers of KCCR Kadri. Bowling here from the far end, right arm over the wicket. The lovely shot. This time he defeats the infield, but they're going for the second and not a good piece of fielding there by the fielder. Once it looks like he will going to collect the ball neatly, slide a bit of fumble, chase that one down at the deep backward point region, and Santosh played his favorite reverse sweep right in the gap. Have a look at it on a replay, just waiting for the delivery and closing the face of the bat by playing a switch it. He got a couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 5 on the board. Santosh is kind of batter. He's not really bothered about how many dot deliveries he played because he got a good potential of covering all that dotted deliveries with one big shot. He's a very good striker of the ball, especially the in front of wicket is very strong. Satish back to his bowling mark. So far he did a great job in this over. Right arm over the wicket. Ball Santosh this time looking for the expansive drive, adjusting the stroke in the last moment because Satish just following the batter, isn't it? It's a good thinking by the bowler's point of view, seeing that batsman making a little bit room to play that big shot on a long on and mid-wicket region, just following the batter, bowling around the legs of the batter. And at last moment, Santosh changing his mind, flicks the ball off his legs down to short fine leg region for a single. 6 without loss of any wicket. Young friend Urwa chasing 44
to qualify for the mega final of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. Satish again, right arm over the wicket, again swings and missed. This time Sajid, he is playing the consecutive 4 dotted deliveries. Just like I mentioned earlier, it's not an easy condition because he missed out the first match, and coming straight away performing is not so easy. Satish back this bowling marker. So far did a great job in this over. Right arm. Sajid, this time appeal for leg before wicket. Umpire not interested, rightly so, because that ball, in fact, of the line is outside the line of off stump. And one more over completed. Good over there from Satish. After completion of over number 2, young friends Urwa chasing 44 to qualify for the finals. 7 on the board and one more good over, Gopi. Just 4 runs came from that over. An excellent start by the KCCR Kadri, and it looks like the 43 what they're going to depend, they are started very well with the first over, which belongs to Kadri. Exactly, Satish. Under power play, this first 2 overs completely belongs to the bowlers of KCCR Kadri. और जैसा कि हमने पहले भी फरमाया है, संतोष और अरशद बजाल जैसे विध्वंसक एक्सप्लोसिव बल्लेबाजों को पावर प्ले में रोक कर रखना कोई मामूली बात नहीं है. तो यहाँ पर पहले 2 ओवर में दिलीप और सतीश ने अपना किरदार बाखूबी अदा किया. 100% मार्क्स गोस टू देम. और जहाँ तक सवाल है, अब रन से चाहिए 37 गेंदे बाकी है, 36. 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है. फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. अब फील्डर मैदान पर छा चुके हैं और यहाँ पर देखना है कि अब संतोष बंटवाल और अरशद बजाल किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. जबकि गेंदबाजी पर इस वक्त लगाए गए रघु, जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था. अंतिम ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था और यहाँ पर वो मोर्चे पर लगाए गए हैं. और यहाँ देखना यह है कि उनका किस तरह इस वक्त अरशद बजाल और संतोष बंटवाल सामना करते हैं. 36 गेंदे 37 रन. और जहां तक मैच के विजय का सवाल है सतीश, अभी भी मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. Exactly, Gopi, it's going to be a 50-50 because still they need to bat very well if they wanted to win the match, because Raghu, the hero of the previous match, he won the man of the match for his fantastic bowling performance. 2 fantastic over he bowled, and now in the semi-final he wanted to continue that performance in this match as well. Again Raghu, right arm over the wicket. First ball, a swing, swings it hard, and he got the center. This is a Sajid for you. This is a Sajid for you. How well he picked that one, Gopi. He knows that Raghu will go to bowl the first ball as the typical leg cutter. And he just have a look at the position what he made. The moving towards the off stump. And he knows that the leg cutter will go into coming in his way. And he swings that one and ball went out of the park. When Sajid is in arc, ball will go to disappear out of park. Have a look at that one in the replay. Oh, that's got a long, many miles in the direction. Just like Gopi is mentioning about always, it's a biggie. And absolutely it's a biggie, isn't it? A huge 6 coming from the blade of Sajid. 13 on the board without loss of any wicket. And that 6 brought young friends Urwa right back into this match. Raghu. Back to his bowling mark. Can he able to bounce back here? But Sajid is a mistimed cricketing stroke, but good enough for him to rotate the strike here. He picked up a single here. The 14 on the board without loss of any wicket. The 14 means now that another 30 runs required for the victory. The 34 deliveries to spare. And just imagine, the one big shot really changed the complexion of this game. Raghu, right arm over the wicket. Bowl to Santosh, sensible, absolutely sensible batting here from Santosh. But even Raghu tried his level best to get that one and it get the run out in the non-striker's end. But Santosh has made it and ball just misses the stump. If the ball hits the stump, maybe it's a close call. It's definitely going to be close. Pushparas knows that he's shaking his head. That definitely is now, if it is a direct, it is some work for Roland Pinto sir in a third umpire. But ball misses the stumps and batter survives. The 15 on the board without loss of any wicket. Raghu back to his bowling mark. Sajid, after playing a lot of dotted deliveries, but one big shot is covering all that dotted deliveries he played in the previous 2 overs. Sensible, absolutely sensible. This is what you called as a cricket all about. Cricket is not just like hitting the balls, every ball for the big shot, but after getting a 6, rotating the strike means you are very much controlled and you are playing as per the condition required. 16 on the board without loss of any wicket, young friends Urwa. Raghu have to do something special here. Both the batters settle down in the middle.
Raghu, right arm over the wicket. Again, reverse sweep comes into play. Santosh quickly realizing that the job which is done by his partner by hitting a one big shot six, then not really bothered about him going for the big shot. You know exactly, just rotation of strike is good enough because six already came. The five singles made that over as 11. This is maybe the thinking what both the batters is implementing in this. Yes, again, right arm over the wicket. Outside the line of off stamp and they're going for the single. And with that single, scoreboard now moves on to 17 on the board. 17 on the board and 18, little bit correction, 18 on the board. And Gopi, what we are expecting from this man, one who did a great job in the previous match, Raghu, we are expecting that he will go into make a breakthrough. But making a breakthrough, it's in other side. But Sajid, that 1-6 really changing the complexion of this game. बिल्कुल साजिद का वो छक्का निस्संदेह मैच को यंग फ्रेंड्स की ओर पलट कर रख दिया। 11 रन पिछले ओवर में बने और खासकर साजिद और संतोष बंटवाल को पावर प्ले के 2 ओवर में रोक कर रखने में सफल रहे थे दिलीप और सतीश, लेकिन तीसरे ओवर में जो छक्का साजिद ने लगाया है पूरी तरह एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के फुटवर्क के साथ गेंद को उछाल कर भेज दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और उस छक्के के बाद रघु का मनोबल कुछ हद तक कम हुआ। हालांकि रघु ने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अंतिम ओवर में एनएम क्रिकेटर्स के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए अपनी विकेट अपने टीम को विजय दिलाई थी। लेकिन यहाँ पर साजिद का जो वो छक्का लगा उसके बाद ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक विचलित हो गए यहाँ पर केसीसीआर कदरी के खिलाड़ी और स्ट्राइक रोटेट करने में सफल रहे अगले 5 गेंदों में। तो साजिद भी मौजूद है, संतोष बंटवाल भी मौजूद है और यहाँ पर अब मैं कहूंगा सतीश केसीसीआर कदरी को अगर कम बैक करना है तो यहाँ पर इस ओवर में उन्हें विकेटें उखाड़नी होंगे, ये जोड़ी को तोड़ना ही होगा क्योंकि ये जोड़ी इस वक्त लगभग जम चुकी है और साजिद और संतोष बंटवाल की जोड़ी जितनी ज्यादा ओवर तक यहाँ पर मौजूद रहेगी यहाँ पर केसीसीआर कदरी के लिए खतरा मंडराता रहेगा। 26 रन चाहिए, 30 गेंदें बाकी और देखते हैं इस साजिद और संतोष बंटवाल की जोड़ी आरंभिक जोड़ी को तोड़ने में किस हद तक कामयाब रहते हैं गेंदबाज इस ओवर में जो ये ओवर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। Absolutely, Gopi. Maybe that the previous over is a little bit expensive, but still they got opportunity, Gopi, because they needed another 28 runs from 30 balls. One good over, which is badly required here for KCC Kadri to back in the game. And more than the good over, I think the wicket-taking over is much required here for KCC Kadri to back in the game. So they brought Dhanush, the one more youngster for the side of KCC Kadri. They brought in the attack from the far end. He bowling right arm over the wicket to Sajid. Again, reverse sweep comes into play. The right in the gap. They're running hard, looking for the second. Very difficult to get. Raghu is one of the best fielder in the side of KCC Kadri. No chance of second when he is in action. So 19 on the board, 19 without loss of any wicket. Both the batters are laid the foundation. Even though they started very slowly, but one good over for young friends who were the previous over. Good enough for him to back in the game. Oh, this time again appeal for leg before wicket, but impact of the line is absolutely, I think it's a bat involved. Even the bat is involved, but I think Santosh, impact of the line outside the line of off stump, but no problem whatsoever for the umpire because bat which is involved in the occasions and the batsman survived. He got a single there, 20 on the board. That means another 24 more runs required for the victory. Dhanush bowling from the far end. Right arm over the wicket. Drives that one. Just have a look at their confidence level now. The one big shot which came from the bat of Sajid. He's looking so different batter, isn't it? First 2 overs is not really, looks like he's very comfortable in the middle. Played 4 to 5 consecutive dotted deliveries. But now he's now looking very confident in the middle. Along with the Santosh Bantwal, they're anchoring the innings. Again, absolutely sensible. This is what you call about experience, Gopi. Both the batter has a lot of experience of playing a big matches like a semi-final. The semi-final playing it's not an easy one, isn't it? Because one small mistake it takes them out of the tournament, and that's why both the batters are very careful. Again, that is a much required dotted delivery there from Dhanush. That's what I'm talking about. 1 or 2 dotted deliveries, which is badly required. If he fails to pick the wickets, at least they wanted to bowl some dotted deliveries. Again, from the far end, right arm over the wicket. This time, driven that one straight down the ground, down to deep long on drift, and they're looking for the second. In comes a throw, and the bowler misses it. Once it looks like that the batter is Santosh, he really struggling to reach his home. The throw which just came from the deep, the bowler, have a look at it on replay, that is just played it one very straight, as straight as an arrow, and fielder fields the ball very well, and returns the ball very well, and have a look at that bowler there. Dhanush,
Oh my goodness, he misses the ball completely from his hand. Otherwise, it's going to be a little bit close call for the umpire. So 24 on the 4 overs completed after completion of over number 4, chasing a total of 44 to win this match. Another 20 runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. And looks like Gopi, the match is completely controlled by young friends Urwa. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर तख्ता जरूर भारी लगता हुआ यंग फ्रेश उर्वा का। तो देखते हैं यहाँ पर कमबैक करने के लिए अब केसीसीआर कदरी को एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर देना होगा, बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखना होगा। और यहाँ पर संतोष बंटवाल और साजिद की जोड़ी एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत दे चुकी है। 24 गेंदे 20 रन, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। मौका जरूर है बाउंस बैक करने का केसीसीआर कदरी के लिए। देखना है कि उनके पारी के द्वितीयार्ध में किस तरह यहाँ पर बाउंस बैक करते हैं केसीसीआर कदरी के गेंदबाज। तो 4 ओवर में क्या होता है ये अब आपको जानकारी देंगे हमारे साथी कमेंटेटर श्रीमान, हमारे सीनियर कहा जा सकता है, श्रीमान दिवाकर सर माइक्रोफोन पर आगे का 4 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, जो कि एक बेहतरीन आंखों देखा हाल कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। हमारे सीनियर माइक्रोफोन पर आइए श्रीमान दिवाकर सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद सतीश जी और गोपी जी, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದೀಗ 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। 44 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ವೇಳೆ ಇನ್ನು 20 ಓಟಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರಿದೆ। 24ರ ಮುಂದೆ 20। ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓಟಗಳ ಆಗಮನವಿಲ್ಲ, 10 ಉತ್ತರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। ಈ ನಡುವೆ ಸತತವಾದಂತಹ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಂತು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್। ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಿಲ್ಲದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಅಮೋಘ ಆರಂಭ, 24 ಓಟಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಈ ನಡುವೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ದಡವನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಇನ್ನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ಅನೇಕ ಬೌಲರ್ಗಳ ಉಪಯೋಗವಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ। ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಸಿಸಿ ಎನ್ಎಂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 44 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು। ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ತಂಡವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಅದೇ ಕೆಸಿಸಿ ತಂಡ ಇದೀಗ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಸಂತು ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳಿದೆ। ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂತು ನಿರ್ಗಮನ। ರೀಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಯಾಚ್। ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿನ ಗತಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿ ಅರಿಯದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ। ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 10 ತಂಡಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। 2 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ 3 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಹ ವಾಡಿಕೆ। ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ 10 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯೋಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಜನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗಾಣಿಗ ಮತ್ತು ಬಳಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇವಲ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ। ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ತರುವಾಯ ಭಾನುವಾರದ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅಂತಿಮ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನೋ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. 9 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಓಟಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರಿ. ಜಿತೇಶ್ ರವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಬೌಲರ್ ಜಿತೇಶ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಾತ್. ಎಸ್ ನಾಯಕನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರ್ಷಾದ್ ರವರಿಗೆ ಇದೀಗ ದಾಳಿ. ಜಿತೇಶ್ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಆಹಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಂಕೇತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ನಾಯಕನ ಹೊಡೆತ ಇದು ಸುಂದರದ ಕ್ಯಾಚ್. ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟೆಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ವಾವ್! ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಹರ್ಷದ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನನ್ನ 0 ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿದ್ ರವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಲಾಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಂಕೇತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಡೆ ಜಿತೇಶ್ ರವರ ಪಯಣ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೋ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ. ಈ ನಡುವೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ಸಂತು ಮತ್ತು ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದರಿ ಸಂತು ಅವರ ಪತನಗೊಂಡ ಒಡನೆ ಹರ್ಷಿದ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಉರುಳಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. 44ರ ಗುರಿ 27 ಆಗಿದೆ. 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ರಿವರ್ಸ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಆಹಾ, ಇದು ಬೌಲಿಂಗ್. ದಿಲೀಪ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜಿತೇಶ್ ರವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ತಂಡದ ನಸೀಬು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒತ್ತಡ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ಪರಾಜಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋರಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು? ರವಿ ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಮತ್ತು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ. ನಾಲಾಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಲಾಸ್ ಮುರಿದೊಡನೆ
ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6, 28ಕ್ಕೆ 2, ಗುರಿ 44. ಕಳೆದ ಎನ್ಎಂ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಜಾತವಾಗಿತ್ತು KCCR ಕದ್ರಿ. ಈ ನಡುವೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ವಿಕೆಟ್ ನ ನಡುವೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನ ನಡುವೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಪರಿಣಾಮ 3ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಯಾವಾಗ 5ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉರುವದ ಅಂಕಣ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 44ರ ಗುರಿ 28 ಆಗಿದೆ, 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 29 ಆಗಿದೆ. 29 for 3. 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನೀರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸಾಜಿದ್ ರವರು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ. ಇದೀಗ ಮುನೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದೂರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ತಳವಳ, ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಏರಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆವೇಶಭರಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ 13 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸತತವಾದಂತಹ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ. ದಿಲೀಪ್ ರವರ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 44ರ ಗುರಿ 29ಕ್ಕೆ 3. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ ನಾಲಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ರವರೇ. 24ಕ್ಕೆ ನಾಲಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವಾಗ 29ಕ್ಕೆ 3. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಟೋಟಲ್ ಬದಲ್ ಚುಕೆ हैं. क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, the complexion of the game which is changed after interval. Just like in a movie, some films are looking so good after interval. And of course, the film is running very well for young friends till 4 overs. But after the dismissal of Sant Bantwal, absolutely, completely, the picture which is completely changed here. And KCCR Kadri really tighten up the screws after the wicket of Santosh Bantwal. And we need to appreciate, I think, Jitesh, the leg spinner. He is the one responsible for changing the complexion of the game with this. Absolutely, that is a good over. You can see that so far in this tournament, there is not that much of leg spinner which is introduced by any teams. But KCCR Kadri, they knows that under floodlight, the leg spinner always they got a great opportunity to get some wickets. And it's not the easy condition. And Jitesh, this over definitely, it is going to be a very crucial over for both the team. And he's on hat-trick. He picked up 2 wickets in 2 consecutive deliveries. That means Jitesh is on hat-trick. बिल्कुल सही है. गीतेश ने अपना हैट्रिक गेंद के जरिए शुरुआत करेंगे और इस बार तिरछी बल्ले से खेले हैं. बढ़िया स्ट्रोक. और जब तक सीवारे के करीब थ्रो हो जाए 1 रन. मैं कहना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि मंगला देवी क्रिकेट ने पिछले मैच पर इसी स्थिति पर थे जब तक 2 ओवर में 15 रन की जरूरत है. तब 7वां ओवर काफी महंगा हुआ. उसी वजह से मंगला देवी क्रिकेटर्स ने पिछला मैच हार का सामना करना पड़ा. Absolutely. And one more thing here is that Jitesh got the wicket, but there are great support coming from the fielding side. One excellent catch, phenomenal catch which is taken in the deep by Arshid. बिल्कुल. और इस बार
और ड्राइव किए हैं ऑफ साइड पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्ड हो जाए, एक थ्रो रहा लेकिन थ्रो इतना बढ़िया नहीं रहा, फील्डिंग तो बेहतरीन लेकिन लंबे से जब थ्रो करने वक्त इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, नियंत्रण में नहीं रख पाता। न केवल बल्लेबाज फील्डर प्रेशर पर है और गेंदबाज भी दबाव पर है, इसी सभी दबाव के ऊपर निभाने वाले, दबाव से ऊपर आने वाला हमेशा खिलाड़ी होते हैं। और इस प्रकार देखिए कि रन संख्या कुल मिलाकर 32 पर अब 12 रन बनाना है, 12 रन 10 गेंदों में, 10 गेंदों में 12 रन, 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ। सो इस प्रकार की इस खेल पर नतीजा कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि 7 विकेट अपना हाथ में मौजूद है, इसके बावजूद भी एक प्लस पॉइंट है, इसके आरंभिक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है। ये गेंद अपील किया गया और अंपायर ने इस अपील को टुकराया। गेंद शायद लेग स्टंप छोड़ते हुए जा रहे थे, बिल्कुल सही निर्णय है अंपायर से, लेग स्टंप से बाहर रहा ये गेंद, आत्मविश्वास नहीं रहा इस अपील के ऊपर, परिणाम लेग बाई के रूप में 1 रन मिले हैं। अब 9 गेंद पर 11 रन, 9 गेंद पर 11 रन, संघर्ष जारी है, नाटक जारी है, क्रिकेट की बेताज सेमीफाइनल अगली गेंद के साथ केसीसीआर खतरे के सामने है। यंग फ्रेंड्स उर्वा, यहां डॉटेड बॉल, इस प्रकार की गेंद का इंतजार में है केसीसी के समर्थक, केसीसीआर के समर्थक, और डॉट बॉल दबाव ज्यादा कर लेते हैं बल्लेबाज टीम को। और दर्शकों की और हम देखें तो दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा संख्या में समर्थक यहां उमड़ पड़े हैं उर्वा की इस मैदान पर। इस बीच अगली गेंद डाउन द ट्रैक, और ये चार्ज, इसी के साथ ए रहा 6 रन। Match, turning point of the match. I would like to say turning point of the match. Absolutely turning point of this match. 2 sixes. If you see the innings of Sajid, he played a lot of dotted delivery, but he's covered. He's make up by hitting one big shot. This is an outstanding cricketing stroke. This is not an easy stroke to play in the book, Divakar, because against the spin, he's coming down the track, using his feet, and have a look at the ball is traveling here. Absolutely unbelievable struck came from the bat of Sajid. बिल्कुल गीतेश ने इस मैच को, अपना टीम को इस मैच पर लाया गीतेश ने, लेकिन अब तो शायद टीम इस मैच को गवाया, इसके कारण लगता है कि शायद गीतेश बन सकता है। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार है साजिद, क्या लाजवाब पारी है, इस पारी पर जिम्मेदाराना खेल है, आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं और इस बार फ्रंट फुट जाकर खेला, हालांकि हाना कर दिया है, लेकिन वहां वो जो बिल्कुल वो जो 6 रन है, बिल्कुल इस मैच पर पूरी तरह से साजिद की वजह से ये मैच जीत की। और यंग फ्रेंड्स उर्वा, अब 6 गेंद बचे हैं, 6 गेंद में बनाना होगा मात्र 5 रन। Well, 5 runs required from 6 balls, but I think is Jitesh, the last delivery ball, the dotted delivery, so that some kind of hope is still remaining for KCCR Kadri, because getting 5, it's not an easy one, especially under this condition, seeing that. Of course, Sajid is a man who is going to be out of strike in the next over. The Munir, so far he came into middle, but he played a very good innings along with Sajid. The fight to get from last over, but it's very interesting to see that which bowler the captain of KCCR Kadri has got more faith that this man I wanted to bring, he can do something special in that last over. Just I want to say, after that expensive over which is bowled by Raghu, can captain will going with him or not? And he's believed with this strength, and Raghu will go into ball that last over. It's going to be very interesting. बिल्कुल आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाना होगा, मनोबल के साथ खेल इस ओवर डालना होगा। तो पिछले 2020 में हम देखे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने, भारत की गेंदबाज, 20 से ज्यादा रन दिए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, और उस दबाव को उभर नहीं सका। अब गेंदबाजी की मोर्चा संभालेंगे रघु। जी हाँ, रघु के बारे में मेरे साथी बता चुके हैं कि काफी आत्मविश्वास खिलाड़ी हैं, काफी विश्वास है उनके ऊपर। अब 5 रन दूर हैं स्ट्राइक पर फिर से जो खिलाड़ी मुनीर, और इस बार लेग स्टंप से या फिर ये क्लीन बोल्ड, बिल्कुल वाह क्या गेंद है, लेग स्टंप अंदर की तरफ आए और बल्लेबाज के पास कुछ जवाब नहीं रहा मुनीर का, और इस वजह से इसके साथ ये विकेट गिरा है। अब अभी भी जिंदा है, मैच का नतीजा अभी भी जिंदा है, कह नहीं पाएंगे। 5 गेंद पर 5 रन बनाना है, 4 विकेट गंवा चुके हैं। अब बचे हुए
5 गेंद पर 6 विकेट अपने पास सुरक्षित है, 5 रन बनाना है। क्या खेल है, पिछले सेमीफाइनल, सेमीफाइनल, शायद आने वाला फाइनल भी इसी प्रकार की होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार की फाइनल हो, लेकिन सेमीफाइनल के बारे में तर्क रहित हम कहना चाहेंगे ये बेहतरीन खेल है। Absolutely, just like in Hindi, paisa vasool. Of course, spectators not really paid for watching this cricket, but I think they spent the time here, but I think they're not wasted their time. They're really entertained, isn't it? Each and every match is absolutely nail-biting finish. And one more big semi-final. Now, very, very interesting decision which has came from umpire Arish Padil that KCCR, they exceed their time limits. They need to bring one fielder inside the ring. Will going to affect the result of this match because 5 runs to get from 5 balls, and bringing one fielder inside the ring means the chasing team has got an opportunity to get boundary because only 4 fielders are saving the boundaries. But maybe it will going to be a benefits the fielding team if bowler bowls a good line that they can save the singles as well. बिल्कुल सही है, जहां तक कि एक एक रन रोकना हो तो 30 दायरे के अंदर ज्यादा संख्या में फील्डिंग रखना होगा। हालांकि ये जो बेनिफिट मैं नहीं समझता हूं कि इतने इस स्थिति पर एक खिलाड़ी सीमा रेखा से अंदर आने में कुछ तब्दीली होगा, लेकिन देखना है कि आखिरकार 5 गेंद में 5 रन। राघु अब गेंदबाजी पर, स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी आ रहा है, शाहनवाज स्ट्राइक पर। देखिए उम्मीदें बरकरार हैं, बिल्कुल एक तरफा खेल रहा 4 ओवर तक, उसके बाद 5 ओवर से लेकर बहुत ही बढ़िया बदलाव हम देखें इस मैच पर। यहां रघु 5 गेंद पर 5 रन, स्ट्राइक पर शाहनवाज। देखिए कि गेंद कहां चले गए और भाग्यशाली बल्लेबाज के नाम बाय के रूप में संपर्क नहीं हो सका अपना बल्ले से। अब 4 गेंद पर 4 रन। पिछले 7 मैच हम देखे हैं, 7 मैच में किसी भी प्रकार की संभावना जरूर था मैच टाई पर अंत होने की, लेकिन टाई पर अंत अब तक नहीं हुआ है। शायद ये खेल कह नहीं पाएंगे, अगर टाई पर अंत हो जाएगा तो क्या नतीजा होगा। जी हां, सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा, सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आयोजन का निर्णय है। अब गौर किया जाए, मंच पर काफी मेहमानगण हैं, विशेष मेहमानगण मंच पर उपस्थित होकर इस खेल का आनंद उठा रहा है। जब तक कोटी चन्नैया ट्रॉफी, हर एक मैच, किसी भी 1-2 मैच को छोड़ेंगे तो हर मैच इस प्रकार के संघर्ष भरा खेल हम देखे हैं। 4 गेंद पर 4 रन। रघु तैयार है, हर बार क्षेत्र रक्षण में तगली लगा रहा है। अभी तक पेनाल्टी मिले हैं, हालांकि एक खिलाड़ी अंदर है 30 दायरे के। बिल्कुल अब समय बहुत ही मूल्य रखते हैं। अब 10 बज चुके हैं, 10:10 की ओर समय आगे बढ़ रहा है। लगता है कि 12 बजने से पहले इस खेल का समाप्त होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समय के अनुसार आगे बढ़े। 4 गेंद पर 4 रन। ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಒತ್ತಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಜೇಬಿಗೆ, ಆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಾಜಿದ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಸಾಜಿದ್. ಆದರೆ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಘು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ 3ನೇ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಜಿದ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಆಹಾ, ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಡವ 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 ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3, 41ಕ್ಕೆ 4. ಸಾಜಿದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಸಾಜಿದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಹನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಘು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್, ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಓವರ್. ರಾಘು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನೋ 42ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಸ್, 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಸಾಜಿದ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ತಂಡ ಸಾಜಿದ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ 1-2 ಓವರ್ಗಳ ಮೊದಲೇ
ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಹೇರಬಹುದಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ರಘು, क्या लाजवाब खेल है, क्या मैच है, सेमीफाइनल खेल है और इस प्रकार केसीसीआर कद्री के सामने है. यंग फ्रेंड्स उर्वा फिलहाल बल्लेबाजी करता हुआ 2 गेंद पर 2 रन. विकेट कीपर ने इस बार बहुत बड़ा गलती की. ना छोटा गलती है, ये बहुत बड़ा गलती. डॉटेड बॉल को छोड़ा. स्कोर बराबरी पर बाय के रूप में. होता है रात के समय पर ऐसा होता है. देखिए, दबाव पर इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं क्रिकेट में. प्रयास जरूर करते हैं लेकिन अंतिम क्षणों में इस प्रकार की गलती अगर कर बैठे हैं. सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, just like Mangaladevi cricketers, they lost their match in the same mistakes. The wicket keeper missed a lot of deliveries, but I think they're understandable. It's not so easy for the wicket keeper under floodlight to judge the line and length, to sight the ball. That's why the problem. Of course, Sandeep is left his place as a wicket keeper. They brought Ashit to keep the wickets, but the result which is going same here. And what could be 2 dotted deliveries in this over? They unfortunately KCCR Kadri, the wicketkeeper missed it. Now 1 ball remaining, 1 run required for the victory, and at least KCCR Kadri they will go into try for the tie, so that the match will go into the super over. बिल्कुल सही है सतीश जी. फील्डरों की संख्या बिल्कुल 30 के अंदर है. 1 गेंद 1 रन अगर टाई पर अंत हो जाएगा, हम एक सुपर ओवर देखने को मौका मिल जाएगा. राघु गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए ये शाहनवाज के लिए दौड़ा. ओ इसी के साथ एक कैच. देखना है कि क्या निर्णय होगा, अंपायर से क्या निर्णय होगा. आउट है और इसी के साथ टाई है. टाई पर अंत हुआ है. अंपायर ने आउट का निर्णय दिया है और देखना है कि क्या अंपायर इस निर्णय से, जी हां ये आउट है. तीसरा अंपायर का मदद नहीं लिया जा रहा है. जी हां, ये तीसरा अंपायर का मदद लिया है. क्या ये बल्ले से आया या फिर पैड से? ये जो समस्या है, इस समस्या का हल निभाएंगे सतीश जी. निगाहें कहते हैं कि ये बल्ले से निकलता हुआ गेंद हो सकता है. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಯಮಾಡಿ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿರಾಶೆಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ಟೈ ಆಗಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ 3ನೆಯ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಕಡೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನದ ನಡುವೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಚಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ರಂಜನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SNDP ಕೋಡಿಕಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಅನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫೀಲ್ಡರ್
ಕ್ಲಾಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆ. ಆಹಾ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸಹಕರಿಸಿ. ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವಾಗತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಮಾನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ನಡುವಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ.
So decision came from third umpire after getting different angles, and the decision from the third umpire, it's out. So super over will go into play here, and I request all the spectators, kindly request you to clear the ground. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Super over will go into start soon by providing 4 angles. Big hand for V4 24/7 channel for giving such a difficult job. I want to say absolutely fantastic job they did, because in a square angle it's very difficult to get, but in a front angle they got a right result. The batsman's bat is in the air, and that catch which is carried to the fielder. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. So please note that now super over will go into play. In this super over, if again the match will go into ended in a tie, then toss will go into give the result of the winner. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಲಾಗುವುದು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. And what a fantastic match. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಸಮಯ 10:30 ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And Gopi ಅಂತಿಮ T20 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ರನ್ನುಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಿಮ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನುಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. Yes, absolutely, it's a good news after India clinching the series, T20 series against Australia. And might be they've taken a revenge of the loss in the World Cup final against Australia, and absolutely it's a good little bit time to cheer for the cricket lovers. And now here in the UCG cricket ground, Koti Chennaya Trophy, the second semi-final which is not yet over, and we are inching towards super over. And super over in the sense the chasing team will go into bat. Young friends Urwa. Chasing team will go into bat first here. And Gopi, what a match. Just like I'm just talking about the last delivery of the ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೌಂಡರಿ ಲೈನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Thank you very much. And just coming back to the super over, and just like the rules and regulation of the super over is concerned, the three batters, they need to choose three batters and one bowler. And young friend Urwa, they choose Sajid, Santosh Bantwal, and Arshad as a batter, and Santosh Japu is the bowler to bowl that super over. And coming back to this, KCCR Kadri, Dilip, Ravi Padayuru, and Sandeep, the three batters, and Dilip will be the bowler. And a very interesting, Gopi, and what a match we are witnessing. Absolutely one of the best match of the tournament, and a match which is ended in a tie. But we need to appreciate the effort of both the teams, because they are played with the true spirit of cricket. And now the result, which is not the result yet to come, and this super over going to be a more interesting. Exactly, Satish. निस्संदेह the match of the tournament. जब मैंने माइक दिवाकर सर को हैंड ओवर किया था, तब आसानी के साथ यंग फ्रेंड्स अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था. 24 गेंदों में 20 रन चाहिए थे. That situation when I hand over the microphone to when I hand over the mic to Divakar sir, young friends needed 20 runs in 24 deliveries, and they are moving along nicely to the victory. लेकिन in the second half of the match, what a fantastic fight back made by the bowlers of KCCR Kadri. दूसरे द्वितीयार्ध में एक बेहतरीन फाइट बैक करते हुए कदरी क्रिकेटर्स, KCCR कदरी क्रिकेटर्स के गेंदबाजों ने अंतिम कार मैच को टाई करने में सफल रहे. तो 100% मार्क गोस टू द बॉलर्स ऑफ द केसीसीआर कदरी इन द सेकंड हाफ. लेकिन यहाँ पर मैच टाई हो चुका है, सुपर ओवर, और यहाँ पर देखते हैं सुपर ओवर में किस्मत किसका साथ देता है. लेकिन किस्मत के साथ साथ आपको प्रदर्शन, परफॉर्मेंस भी देना जरूरी होता है. और देखते हैं दोनों टीमों के तीन तीन खिलाड़ी जो चुने गए हैं बल्लेबाजी में, एक एक खिलाड़ी जो गेंदबाज के रूप में चुने गए हैं. और देखना यह है कि ये चार खिलाड़ी, दोनों टीमों के चार खिलाड़ी में से कौन से चार खिलाड़ी अपने टीम को इस मैच में, इस सुपर ओवर में विजय दिला पाते हैं. फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, सुपर ओवर इज नाउ, वी आर एक्सपेक्टिंग सुपर ओवर विल गोइंग मोर इंटरेस्टिंग एट द सिचुएशन. Absolutely, Gopi, and they're chosen, they're the best of their 11, and that's why the two opening batters, the very destructive Arshad the Bajal is in the strikers end, and Santosh Banpal, one more destructive batter in the non-strikers end. But they're the successful bowler, Dilip for KCCR Kadri, the captain of the side, will go into ball that super over. And the first delivery, and I request all the spectators, please cooperate with the organizer, don't keep your legs inside the boundary line. And please cooperate with the organizers, and please cooperate with the fielders of a fielding team, because it will become very difficult when they try to save the boundaries, and difficult for them. So please understand that, and you are the one who really cooperate toward the tournament. We needed your cooperation until the end of this cricket tournament as well. Again, the Sunday little correction, Dilip will go into ball that super over. The first ball of the super over. Dilip taking his own time, bowling, pitching the ball several times, and he tried to bowl the first ball around the wicket to Arshad Bajal. Arshad this time went for the sweep shot, misses the line completely. Each and every dot ball, the supporters of KCCR Kadri really cheering. The big oohs and ahs goes around the field. This is the beauty of undrawn cricket. Have a look at the crowd here. Absolutely jam-packed stadium and electrifying atmosphere out here in UCG cricket of this most prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. 5 balls remaining in the innings of young friends Urwa. Right arm down the wicket balls. Arshad going for the big swing of the bat. And a slight a bit of that ball, it looks like going to miss the stumps, and by call by umpire, wicket keeper again, Sandeep. That understandable that it's not an easy job for the wicket keeper. And so many mistakes done in the previous, the previous innings, that they missed out some opportunity behind the stump. Now first run came here for young friends Urwa. The beauty of the super over is that if the team losing one wicket means they are started to feel the pressure, because only 3 batters going to bat. If losing 2 wickets means it's all over, and that's why it's very important here for both the batters. Without losing a wicket, they need to get some runs. And here again, Sandeep, little correction, Dilip operating over the wicket. This is going to be a big mistake there from Dilip, the captain of the side. Might be slight a bit of under pressure. Wide call by umpire. Not only the wide, 1+1, 2 wides, 3 on the board now for young friends Urwa. Maybe that was a big problem, Gopi. When it's a left and right combination, they need to change line, isn't it? When it is a very good line to ball for the left-handed bowler, and the same line becomes a wide for the right-handed batter. That's one of the big problem when you're having a right and left combination. 3 without loss of any wicket. Now Dilip coming round the wicket to the left-hand batter.
Ashad going for the expansive drive. Good comeback. Excellent comeback here from Dilip. Two deliveries, three runs on the board. Now 3 balls remaining. The captain of the side, Arshad, facing captain of their opposition, Dilip. 4th time in this over. Looking for the improvisation. Defeats the infield ball. Running down to deep. Fine like boundary. Will it go into the ball? No, it just stopped inside the boundary line and a couple of runs has been taken. Slight a bit of misjudgment by the fielder because he thought ball is going a different way. The Ravi Patayuru is standing at the fine leg region. He's just moving to his left, in fact, but ball going to his right, isn't it? And a couple of runs has been taken. That misjudgment, the very important couple of runs here for young friends. 5 on the board. 2 balls remaining in the innings. Dilip, right arm round the wicket, using his feet, lofted that one in the vacant area, down to deep extra coverage, and they're running hard, looking for the second, completed it 2, and they're turning out for the third. In comes the throw. 3 valuable runs has been taken. They're going for the 4th, and they lost the wicket. But they're not really bothered about that wicket, Gopi, because only 1 delivery remaining, and Ashad wanted to back on the strike. That's what maybe the strategy from this to batter. And 3 valuable runs, Gopi, takes young friends Urwa into comfortable position. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अब खूबसूरत स्ट्रोक खेला था इनटू द गैप एज वेल अरशद ने, और तीसरा रन पूर्ण करने के बाद चौथे रन पर दौड़ पड़ते। विकेट जरूर गिरा संतोष का, लेकिन आप कहने के अनुसार चिंता का कोई विषय नहीं है। यहाँ पर एक गेंद बाकी है, एक बल्लेबाज आना बाकी है, तो 3 रन जो अरशद ने इस गेंद पर बटोरे, अरशद और संतोष बंटवाले, वो 3 रन निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में एक बेहतर स्थिति पर पहुंचा चुका है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद बाकी। अब देखते हैं इस अंतिम गेंद पर यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Well, Dilip is the captain of the side. He know exactly. After conceding 8 runs in this over, he desperately wanted 1 good ball, at least 1 dotted delivery here. But Ashad knows that they got 8 runs on the board. 1 big shot will going to get them a very good position to win this match. Here is Dilip, right arm over the wicket. Went for the big shot. This time appeal for leg by wicket. Umpire not interested. Leg by call by umpire. That's it. 9 runs came from that super over. And 10 will going to be a double figure, Gopi, the target for team KCCR Kadri. And what do you think, Gopi? Will it going to be enough for KCCR Kadri? 10 to get from 1 over. And very interesting to see that Santosh Jappo will going to ball that super over, and it's going to be a more interesting, isn't it? The super over is bowled by the most experienced bowler for the side of young friends Urwa. But we need to see that the KCCR Kadri, they've chosen the 3 batters here. They've chosen Dilip, Ravi and Sandeep. But very interesting to see that which batter will go into open the innings. Will it go into be a Ravi? Definitely will go into one opener. And partner for him, I think Sandeep or Dilip. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 10 रनों का लक्ष्य है 1 ओवर में, और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि केसीसीआर कदरी के 3 बल्लेबाज जो है उनमें से 2 आरंभिक बल्लेबाज कौन से मैदान पर उतरेंगे। तो रवि ज्यादातर इस वक्त अंदाजा लगाया जा सकता है कि रवि पड्डयूर आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर एक छोर से उतर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से दूसरे बल्लेबाज उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे, दिलीप या फिर संदीप। तो यहाँ पर 10 रन बनाने हैं। 6 गेंदबाज, गेंदबाज है संतोष जप्पू, जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज और कई सालों का तजुर्बा है, और इससे पहले भी अंतिम ओवर में जब रन से चाहिए थे, जितने भी चाहिए थे, तब ऐसे कई उदाहरण देखे गए कि संतोष जप्पू ने उस रनों को रोका है उस निर्धारित ओवर में। इससे पहले कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे, और यहाँ पर देखना है कि संतोष के पास जो अपार अनुभव है, उस अपार अनुभव का इस सुपर ओवर में वो किस तरह अनावरण करते हैं। फिलहाल इस वक्त बल्लेबाज का इंतजार है, तो फील्डर यंग फ्रेंड्स उर्वा के इस वक्त मैदान पर छाते हुए 10 रनों का लक्ष्य, और 10 रनों का लक्ष्य मैं कहूंगा सतीश बराबर इस वक्त संभावनीयता है। और देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करेगी। लेकिन कोई भी टीम इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश करे, निस्संदेह इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में हमें एक रोचक क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है, और कहना पड़ेगा ये मैच दिस इज एन एब्सोल्युटली मैच ऑफ द टूर्नामेंट। No doubt at all, Gopi. Undoubtedly, the kind of semi-final we are witnessing here, definitely that will go into make a history in USG cricket ground, isn't it? Absolutely fantastic match, and both the teams really played a good game of cricket now. Now, just coming back to Santosh, you have just explained about the Santosh, what the kind of experience he has got. Definitely, Gopi, it's no doubt at all. And so far, he is one of the senior most player for the side of young friends Urwa, and he got a lot of experience in his side, and especially his, some deliveries.
he bowling the off cutter or leg cutter, and the most of the times he's bowling the leg cutter, one of his biggest weapon. But need to see that strategy, what Kadri cricketers will go into implement, because he's not bowling along the carpet just like what Dilip is doing. But Santosh is kind of a bowler who getting a lot of flight in the deliveries. But they need to choose the right batters to tackle with the Santosh turning delivery. Now the waiting is all over. Just we are waiting that which batsman will going to give support for Ravi Padayuru. It's absolutely for Ravi Padayuru, the man who got a very important six from the bat. Is a Sandeep, the one more senior most player for KCCR Kadri registered. They came into bat. And what do you think, Gopi? Will it go into the right path to get a 10 runs for KCCR Kadri? And looks like, Gopi, these two opening pair for KCCR Kadri, they're going to fight for the victory. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर रवि पट्टायूर के साथ संदीप को भेजा गया है और हमारा पूर्वानुमान सही निकला। रवि पट्टायूर को भेजना था और उन्होंने भेजा है। तो यहाँ पर संदीप दूसरे ऑप्शन थे, उनको इस वक्त आरंभिक तौर पर प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पर संतोष जप्पू गेंदबाजी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और जहां तक संतोष जप्पू की क्षमता के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो यहाँ पर एबिलिटी, क्षमता के बारे में आप जिक्र करते हैं रवि पट्टायूर के, तो रवि पट्टायूर भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो खासकर एक बार अपना रिदम प्राप्त कर ले तो निस्संदेह गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं। तो सुपर ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहा है और देखते हैं यहाँ पर 10 रन बनाने रवि पट्टायूर सामना करने के लिए तैयार। संतोष जप्पू इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए 10 रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। हियर वी गो, पहली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद रवि के लिए, क्योंकि इस बार बेहतरीन गेंदबाजी संतोष द्वारा। अब 5 गेंदे 10 रन, तो डॉट गेंदे यहाँ पर फेंक चुके हैं संतोष और अब 5 गेंदों पर 10 रन बनाने हैं। और देखते हैं अगली गेंद पर रवि पट्टायूर क्या करते हैं। दाहिना तो द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद कौन साइड पर उछाला, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, रात का वक्त आमतौर पर उर्वा मैदान पर हवा का रुख नहीं सा होता है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। अगर सुबह का वक्त गेंद को उछालते तो शायद छक्का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई। अब रवि पट्टायूर का विकेट गिर चुका है, 2 गेंदे भी जा चुके हैं। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से उछाला था, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर। अब सतीश अंतिम विकेट बाकी, अंतिम जोड़ी मैदान पर, 4 गेंदे बाकी, 10 रन और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही यहाँ पर KCCR Kadri के इस मैच में विजय दिला सकती है। Absolutely, Gopi. Do or die situation now for KCCR Kadri after losing Ravi Sali and Padir. And once again, once Ravi Padayuru just shuffled across the line of the delivery, swings that, and everyone thought that it might be a 6, isn't it? And all the heart is went into the mouth, isn't it? Absolutely, everyone thought it might be a 6, Gopi. Just like you mentioned, there's no wind at the ground. At the same time, the softness of the ball really, really that ball is carried to the field. And now Santosh is now looking so confident. 4 ball remaining. 10 runs required for the victory. The captain of the side, KCCR Kadri, Dilip, will go into face. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। दिलीप के लिए चूके विकेट कीपर संतोष चूके और रन के लिए दौड़ पर यहाँ पर बल्लेबाज, पहला रन जुड़ चुका है। अब लेग बाई का इशारा, 3 गेंदे बाकी और 9 रन चाहिए और ऐसा कहना पड़ेगा KCCR Kadri के लिए सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में अब वापस ला सकते हैं। फिलहाल 3 बेहतर गेंदे यहाँ पर संतोष फेंक चुके हैं और उन्हें इस वक्त इस सिलसिले को बरकरार रखना है अगले 3 गेंदों में और देखना यह है कि वो इस पहले 3 गेंदों के सफलता के सिलसिले को अगले 3 गेंदों में बरकरार रख पाते हैं या नहीं। और इस वक्त संदीप सामना करने के लिए तैयार। संतोष जप्पू दाहिना तो द विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूके रनआउट का मौका लो, स्ट्राइक रेट पर निशाना चूक चुका है, वरना सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पर KCCR Kadri के लिए। तो 2 गेंदे अब बाकी, 6 and 4 रिक्वायर्ड, 6 and 3 इनफैक्ट, तो 9 रन चाहिए, लेकिन एक छक्का और एक चौका लगाते हैं तो यहाँ पर वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2 गेंदे 9 रन, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। संतोष काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए, अरशद बजाल उनकी ओर दौड़ कर आए, कुछ कहा उन्होंने संतोष से। अब मैं कहूंगा सतीश ये लगभग अंतिम अवकाश है, दिस द लास्ट चांस, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ KCCR Kadri। 9 required, 2 balls remaining और संतोष इस वक्त तैयार संदीप के लिए। Here we go, दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके, that's it, 9 of last ball required, last wicket in hand। और अब ऐसा कहना पड़ेगा अगर इस बचे हुए अंतिम गेंद में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा की विजय यहाँ पर निश्चित है। लेकिन क्रिकेट
अनिश्चितताओं के खेले। और सतीश देखते हैं इस अंतिम गेंद में क्या होता है, लेकिन अब तक कहना पड़ेगा फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस bowled by Santosh so far in the first 5 deliveries. Absolutely, Gopi. He is the one. He is leading from the front for young friends. Urwa. Why he is chosen to bowl that super over? This is the only one reason you can see that the man with the golden hand, Santosh, handling the pressure well. Have a look at all the deliveries about it. Absolutely consistent in the line and length, and he made absolutely fantastic last super over for his team. Now, last delivery remaining. 4 minutes left in this game. Coming down the track, using his feet, lofted that one in the vacant area, but it's not good enough for KCCR Kadri. Young friends Urwa entering into the mega final of prestigious Koti Chennaya Trophy 2023, defeating KCCR Kadri with a close encounter, one of the best match of the tournament, which is comes to an end. Unlucky here for KCCR Kadri. They really tried their level best to win this match, but they won. Really, they won the heart of all cricket lovers. The way that they played their innings, played this match, and congratulations for young friends Urwa. They are in the season, the first time in the season 23-24, they enter into the mega final in the USG cricket ground. Here is a cash prize announcement here for Sajid, the Sharif of young friends Urwa, announcing 2,000 rupees for Sajid. The 2,000 cash for Sajid for his effort from the bat. And I request Sajid, please come here to collect your 2,000 cash. There will be 10 minutes of rest. The 10 minutes rest will be given for young friends Urwa. And so, young friends Urwa, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 10 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಜಿದ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. यहाँ पर स्वीकार 2,000 रुपए स्वीकार करते हुए संतोष प्रशांत यंग फ्रेंड्स उर्वा द्वारा, तो बेहतरीन, एब्सोल्युटली कांग्रेचुलेशन फॉर सादिक, 2,000 rupees award declared by Mr. Sharif Patwal. So
ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೀಗ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. So welcome back once again for the mega final of this prestigious cricket tournament. Yes, Koti Chennaya Trophy 2023. At last, the two teams, they came into the big final. Everyone thought that it might be a Torpedoes Ghana and it might be NM Cricketers Mangalore, and every expectation which looks to be very wrong here, because Gori young boys, they came into the final. First of all, I congratulate Gori young boys, and congratulations Naufal leading the team and takes your team into the final, and congratulations for young friends Urwa, because not really having their full strength, and they got only 3 to 4 experienced players, but having all youngsters, and did a great job. Big hand for young friends Urwa, did a great job to came into the final of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. And I would like to welcome two teams captain for the tossing ceremony. Yes, it's now time for the toss. So I request Divakar sir, please come forward. Gopi, please come forward. Please turn that, okay, that way, the camera in front of you. Now it's a time for the toss. Yes. Arshad will go into toss the coin, and Naufal will go into tell whether it's a tail, head, which is a call from Naufal, and yes, it is a head. And Naufal won the toss. Big end for Naufal, captain of Gori young boys, won the toss, and they elected to. He is just watching their teammates. What could be the decision? He is almost confused. Naufal. Decision. Yes, no, this is a big final. You have to fielding. You are elected to field first. ಎಷ್ಟು ರನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಎನಿಸಿದೆ? 30-35 ಒಳಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವವನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೌಫಾಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. 35 ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಅರ್ಷದ್, ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಟಾಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 35 ರನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ? 48 ಬಾಲ್ 48. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಸೀಸನ್ ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ UCG ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಜಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಯಾವ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್. ಅದು ಯಾರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್? ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್. ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಟಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ won by the captain of Gori young boys and elected to field first. Now it's over to Kiran Kumar Kodikal, one who is successfully organized this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. Big hand for Kiran Kumar Kodikal, and over to him. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ
ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಈ ಒಂದು 10 ತಂಡಗಳ 8 ಓವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು, ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಮೇಯರ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದ್ದವರು ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಯಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ಗೋಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you so much, Kiran Kumar Kodikal, because you are the one is leading from the front under your great leadership and under the support of all the teammates of this Koti Chennaya brigade. Now, okay, so there are one changes in the young friends. Urwa playing 11. Shashi will going to play in this big final in playing 11. And before we are going to the microphone, of course, I want to have some experience from Divakar Uppala, because it looks like it's a different experience, Divakar, because UCG cricket, everybody knows there's lots of under cricket. But what do you think about this cricket tournament and your experience in this UCG cricket ground? ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ಓವರ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ತನಕ 8 ಓವರ್ಗಳು ಸರಾಸವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 8 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 10 teams. Thank you very much. Thank you very much, Divakar, for an inspirational word. And now time for my friend Gopi to have a word. Gopi, your absence, which is felt till the evening, but after you came into this tournament, the atmosphere is becoming electrifying. And just I want to say, coming back to these 2 teams, Gopi, well deserved 2 teams. Because one team which is came from the group of death, we are talking about a team, Young Friends Urwa, they came in a group of death. No one thought that Young Friends will go into came into the big final, but they played very good game of cricket. And even the Gori young boys, underestimated, because just considering their performance last season, never looks like they will go into come to the final, but they played an excellent game of cricket and they deserve the place in the big final. And in the big final, Gopi, what do you think? Will it going to be a Gori young boys or will it going to be a Young Friends Urwa? बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, और यंग फ्रेंड्स उर्वा और गोरी यंग बॉय दोनों संतुलित परफॉर्मेंस, संतुलित प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर इस श्रृंखला के ग्रैंड फाइनल मेगा फाइनल में पहुंचे. और ग्रुप ऑफ डेथ से यंग फ्रेंड्स उर्वा आई थी और गोरी यंग बॉयज ने भी बेहतर प्रदर्शन दिया है. तो दोनों समान टीमें इस मेगा फाइनल मैच में भिड़ रहे हैं. और मैं समझता हूँ हम एक्सपेक्ट करते हुए एक्सपेक्टिंग सम फैंटास्टिक बैटल इन दिस ग्रैंड फिनाले मैच. और जहाँ तक विजय का सवाल है, बराबर
का संघर्ष की हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं और देखते हैं इस मेगा फाइनल मैच में आखिरकार चैंपियन इस कोटी चेन्नई ट्रॉफी 2023 का कौन सी टीम बनता है। लेकिन विजेता कोई भी हो, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों को एक बेहतरीन क्रिकेट का हर पहलू यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। सतीश। Absolutely, Gopi. 100% agree with your point. Now it's the time for Kiran Kodikal have some word. ಈಗಾಗಲೇ ರೋಹಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವರು ದಂಬೇಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಿನ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೀಪರ್ ತಲಾ 3,000. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲಾ 1,100. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ನವರಿಗೂ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲಾ 1,100 ಕೊಡುವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ. Thank you very much, Sir Kiran Kumar Kodikal, because this is a different concept. That's why whenever Kiran Kumar Kodikal organizing cricket tournament, there will be a different concept. And Gopi, in the first time in the history of our cricket commentary career, that prize which is announced for the officials. And thank you very much, Kiran Kodikal, for your Rohit. Thank you, Rohit. Thank you very much, Rohit sir, for your encouragement. And we are really trying to entertain the spectators in the big mega final. ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾನುವಾರದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ. ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹಗಲಾಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಉರ್ವ ಅಂಕಣ ಇದೀಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಮರಕ್ಕೆ ರಣಾಂಗಣವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ವಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ರಜಾ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉರ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನೌ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟ್ರಾಫಿ 2023. ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ rupees 1 lakh. The first ball of the mega final. Big appeal coming from Naufal there, but umpire says it's from the bat. Arshad has got a bat onto that, so that the batsman got a single there. First run came here for team Young Friends Urwa. So please note that there is a DRS. You cannot force the umpire for the DRS. There is no, I think, as far as the rules and regulation of this cricket is concerned, there is no DRS for leg before wicket. Please note, please understand, Gori young boys, the captain. So already it's too late. We have taken a lot of time for the second semi-final.
So that I request Gori young boys, please respect the decision of the umpires. Yes, thank you very much, Gori young boys. They're really accepting the result, decision of umpire Arish Padil. Umpire Arish Padil saying that ball is got a bat onto that, and batsman survives. So one without loss of any wicket. Now fall back this bowling mark. Just I want to see the field set. Short fine leg, square leg. There is a short mid wicket, deep square. Deep question one is the deep wideish long on is there. One long off is there. There is the two fielders outside the circle in the first over of the power play. Third man is the cover point. There is a short mid off. Now getting some ideas from the teammates, because they know there's a Sant Bantwal is the one, is a very dangerous batsman at any time for any opposition, because he is a killer of the ball. He loves to beat some big shots. Not only he is engaged with the big shot, but he was a very good strike rotator. Now he will go into face Naufal, bowling away from us. Right arm over the wicket ball. Oh, beautiful delivery. Absolutely good one there from Naufal. Almost looks like it's just like an overarm cricket. Ball is getting a delivery which is just shaping away from the right-hander batsman, pitching in a line, and just missing the outside edge of the batter Santosh. And score remains on 1 without loss of any wicket. We have a very good Kannada commentator. We are welcoming him. Umesh Dandakeri sir is present here in our commentary box. One of the very sweetest commentator in Kannada language. This time, lovely shot, up and over, down to deep extra cover. And two fielders chasing the ball. One fielder succeeded to push the ball inside the boundary line. Pull the ball, little vacation inside the boundary line. And meantime, Santosh Bantwal completed a couple of runs. It's a positive attitude here from Santosh Bantwal. After that, the good delivery which is just shaping away from the right-hander batsman. This time, Santosh Bantwal just ready to play that outswing delivery, just making room to play the shot, inside-out cricketing stroke, just got that one over the top of the infield, and he got a couple of runs, 2 without loss of any wicket. Now fall again. Right arm over the wicket bounce. This time drives that one down to short mid wicket division. Good piece of fielding there by the fielder. Tyagaraj is the big man down at the short mid wicket division. It's not so easy for the fielder like Tyagaraj to bend quickly to his left to field the ball. But it is a great job to field the ball there. One single added to total, then scoreboard now moves on to 3 without loss of any wicket. Young friends versus Gori young boys. Battle for the title, Koti Chennaya Trophy 2023. The first tournament of the season in UCG cricket ground. All we can see that the successful cricket tournament. The thanks, just like the Kiran Kumar Kodikal mentioned about, all we can see that the great effort, the teamwork make this possible, and we are in the big final. Now fall. This time swings it hard, down to deep square leg region. And before the fielder coming from the deep square leg, what a throw! What a throw that coming from the fielder! Unbelievable! This is the third time you can see that the same fielder. This is an outstanding fielding performance here by the fielder. The fires once again, the man with the golden hand. Have a look at that throw from the fielder. I think instead of I want to see how he fielded, but I want to see how well he managed to return the ball. Just into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper gathers the ball, uprooted the stumps, and we just wait for the umpire signal. It's a out, which is a signal came from third umpire Pushparaj. What a fantastic piece of fielding there by Fayaz. Outstanding. Have a look at that. I want to see that V4/24/7 channel cameraman to please just go back, because I want to see the Fayaz, how much ground he covered. Almost he is in a deep mid wicket region. Just I want to see the replay. That Fayaz, he's covered the ground. He's in a deep mid wicket region, but he fielded the ball down at deep square leg region. He covered the ground a lot. Have a look at it on a replay. Slog sweep comes into play, and Fayaz is almost running from the deep. We are not getting yes. I want to see how much he covered the ground. This has been outstanding performance. And decision which is given already. The out, which is a decision already given by third umpire Pushparaj. Out already given. Yes, I already told that out which is given.
and umpire Arshad did not really listen that one. And out which is given by the third umpire. So first wicket is back into the four. And now we can see that the Fayaz there in the deep gathers the ball and returns the ball. And have a look at the throw. It's outstanding because it's a soft ball. It's a soft tennis ball. It's not so easy for any fielder to return the ball from the deep boundary region into the hands of wicketkeeper. So 4 for the loss of 1 wicket. This is definitely going to be a huge wicket here for KCCR Kadri registered. Disappointment dismissal here for the captain of Young Friends Urwa, Arshad, back into pavilion. The new batter, one more left-hander replacing Rajesh Ubar. So far, he not that much of impressive from his bat, but he is a kind of batter who really wanted to grab the opportunity, especially that the big final, the mega final. He always loves to perform, and wait and see how he will going to perform against KCCR Kadri in the big final. Little correction against Gori Young Boys. This time nicely flicks it off his legs down to deep, short fine leg region, little bit correction, and he got a single for that. Good over there from Naufal. The captain of the side did a great job to restrict the opening batters to just for the 5 runs and 1 wicket in the form of run out. It's 5 for the loss of 1 wicket. So the 4,000 cash, now cash prize, which is increased by Preetham. And so far there is no one succeeded to hit the banner in front of our commentary box. There's a Preetham Ganiga announcing that cash prize of rupees 4,000. And I think the batter in front of the bowler, he's got a record of getting a most amount in KPL. 35,000 he got. I still remember, maybe that edition KPL 1 or 2, this man Rajesh Ubar is grabbing the opportunity. Whenever there is a big prize money, he is ready to grab. He is a very hungry man. Not only for the money, but for the run as well. The 5 for the loss of 1 wicket. And one more announcement. The prize money which is raised for Santosh Bantwal. If Santosh Bantwal is able to hit that banner, he will going to get 10,000. Maybe Preetham wanted to see his cousin to hit the 6 here. And here is the first of the over number 2nd. Again, nicely played that one down to third man region for an easy single. 6 for the loss of 1 wicket. I request umpire Arish Padil sir, slight a bit move to his right because cameraman not having a good view. So Arish Padil sir, thank you. Not front, right, little bit right. Thank you. The 6 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd is in progress. The young talented bowler Fayaz is in action. The man who is responsible for the run out of the big wicket of Arshad is in action. From Preetham banner end, right arm over the wicket. Santosh lofted that one just over the infield, but not really having that much of timing enough, but enough for him to come back for the 2nd. Before the fielder, I think Riaz of Gori Young Boys just running back and fields the ball, returns the ball, ample time for Santosh to complete that couple of runs. Scoreboard numbers on to 8 on the board. 8 for the loss of 1 wicket. What a fantastic cricket tournament we are witnessing here. This is an electrifying start for the season 23-24. Fayaz bowling from the far end. Right arm over the wicket. Delivers. This time I'm looking for the helicopter shot. Santosh loves to play that shot, but this is a much faster delivery, isn't it?
The much faster delivery ball by Fayaz. That's why the Santosh couldn't manage to get that one from the middle of the bat. But he managed to get the single there. Scoreboard now moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Fayaz changing the angle now is operating round the wicket because left-hand batsman in front of him. Tried to fix that one off his legs, missed it completely. Then Shivaraj behind the stump did a great job to stop that ball because one of the difficult job whenever the ball is going outside the line of leg stump and always is going to be challenging for the wicket keeper behind the stump, especially in underarm cricket, it's not so easy. 9 for the loss of 1 wicket. Fayaz so far did a great job. Right arm, round the wicket. Again, reverse sweep comes into play. Oh, mix up. The mix-up, Santosh Bantwal already made his way to the striker's end, but Rajesh Ubar is not really interested. But here is something problem out here for Santosh Bantwal. Maybe the ankle which is twisted while he is running fast. Looks like he just lost his bat from the hand. But might be the big problem out here for Santosh Bantwal. Maybe the bat which is stuck between his legs while he tried to take the runs. Or it is the reaper when you try to drag the bat into that crease. Maybe that, yes, always is going to be a big problem sometime for the batters. And Santosh wanted to get some treatment. And it's a very good sportsman spirit shown there by Gori young boys players. Quickly running towards Santosh Bantwal. And just want to see whether he is good enough to continue his batting. Of course, he's got up and he's walking towards striker's end. The 10 for the loss of 1 wicket. Absolutely festival atmosphere here in USG Cricket Ground. Thanks to the organizers. The Koti Chennaya Seva Brigade registered Mangalore organizing such a wonderful cricket tournament. And that will going to make a history here. Not only in the frame of a successful cricket tournament, but different concept which is implemented, the bringing the 13 legend players to inaugurate this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. Fayaz practice bowling mark to Santosh. There's some Santosh once again helicopter shot comes into play. Is a very good wristy player coming back for the second. This is the Rajesh for you. When he runs very quickly. But very difficult for the partners because you don't understand where and when he will going to start the runs. He will always give the start, but sometimes he is changing his mind. It's very difficult for understand for the partner when he will going to run fast, when you are going to come for the second. But this time he runs very quickly between the wicket and completed a couple of runs. After completion of over number 2, young friends Urwa, 12 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 6 runs per over. They're always going to be a dream for each and every team to start the season with the victory. And the Gori young boys and young friends were the two teams. Really, they played a good game of cricket to get into the finals. The bowlers in on, I think, is Sahil did precaution. Sahil brought in the attack. And thanks to a special thank to Rohit sir because they are yes recognizing the effort of the officials. But I want to say that here is one more the person who is responsible for the success of the cricket tournament. The scorer, Satyaraj, did a great job so far in this tournament. And our scoreboard operator, Swastik, not only we operated the scoreboard, but he's helped in the scoring department as well. And thanks to all the technicians, the cameramans of V424x7 channel did a great job for the success of this cricket tournament. Here is again first ball. Oh, looking for the improvisation, exposing his stamp, and Sahil did the trick here for Gori young boys. It's 12 for the loss of 2 wickets. Have a look at that one, and he's almost wanted to get that one very fine, but the ball defeating his bat. Once he missed the ball from his bat, then bowler definitely has got a chance to hit the stump.
Again, not a good tournament here for Rajesh. Again, looks like everyone expecting that in the big final, Rajesh will go into talk with this bat. But again, that the beauty of the delivery coming from Sahil. So far, this young man did a great job in the bowling department of Gori young boys. So Shashi has got opportunity to play in the final. The playing 11 he got an opportunity to play here. And one more very useful cricketer and a good striker of the ball. Now just walking towards the middle and takes a fresh guard from umpire Adish Padil. Sahil strikes, very important breakthrough for Gori young boys. The team, everybody knows that the Gori young boys, the team which has got a long history in the history of underarm cricket, more than 35 to 40 years. And still they are in the competition. Again, improvisation from Shashi there to pick the single. More than anything, anyone is the more happiest person, I want to say. We are just missing Suresh Bian, the one who really takes Gori young boys into highest level in his management. And after that, I think everyone of Gori young boys, Umesh Kotian, Dinesh Bajilkeri, the senior player members did a great job. Still they are in a competition. And one more single has been taken there by Santosh Bantwal. The 14 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. Sahil backed his bowling mark. With a short run up, pass umpire Harish Padil. Right arm over the wicket delivers. They went for the reverse sweep, missed it completely. Once again, wicket keeper Shivaraj did a great job. Good gather behind the stumps, and there is no run at all. So in this over, Sahil did a great job. He picked up a wicket in the first ball. Then he bowled 3 very good deliveries in that. He considered only 2 runs. So that only 2 runs in that over so far. The 5th time in this over, bowling right arm over the wicket to Shashi. Again, nicely swept that one down to deep square leg region for an easy single. With that single, Skobodna moves on to 15 for the loss of 2 wickets. We are talking about the contribution for the success of this cricket tournament. Jaya of UFCA, who did a great job to make this pitch very suitable and did a great job as a curator. One more single has been taken there by Santosh Bantwal. Very cool and calm, Santosh, after losing his partner Ashad. He knows that he needs to play a big innings for his team. So after completion of over number 3, it's 16 for the loss of 2 wickets. Now one more announcement I want to announce here, that for Gori young boys, Mustafa, if he able to get any wicket here, he will going to get 1,000 rupees cash. And AK Old Scrap dealer Afreed announcing this 1,000 rupees for Mustafa. But in operation in the far end, Fayaz will going to continue. 5.33 runs per hour, the run rate progressing here. Right up over the wicket. This time again, batsman going for the drive, misses completely. Fayaz has got opportunity to field the ball on his follow through. He misses it, and Santosh got a single for that. It's 17 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. So still it's a very good crowd here enjoying the game of cricket. A lot of supporters for both the teams. Young friends Urwa and Gori young boys. They wanted to see that their favorite team will going to lift this prestigious title, Koti Chennaya Trophy 2023. Short mid-off, short cover point. One fielder at deep extra cover. One fielder at deep long on deep mid-wicket and deep square leg. Short fine leg, short mid-wicket. The fielder inside the ring.
This time, lovely execution here from Sashi. One of his favorite shots. Sashi loves to play that kind of cricketing stroke. Let the ball coming into his bat, closing the face of the bat last moment and getting single down to short fine leg region. So from the far end, Fayaz. This time again, Santosh Bantwal looking for expansive drive. One of his favorite shot. He knows that he's a good in it. He wanted to get one big shot down to deep long on, but they not really got that much of room to play the shot. Fayaz just following the batter. One more single taken. 19 for the loss of 2 wicket. Again, Fayaz back this bowling mark. Right arm over the wicket delivers. Sashi, oh, lovely improvisation. He defeats the infield. Ball running down to deep third man boundary, but there is a protection has been given. And seeing that Shashi is too good in that particular cricketing stroke. Once it looks like it's going to be a boundary, no? But I'm not really observing the fielder down at the deep third man. He just prevents the boundary there. Have a look at that one. And the fielder from deep whitish third man region is quickly moving to his left and fields the ball. 20 for the loss of 2 wicket. This time Santosh again looking for the expansive drive. Again not really getting hold of that one. Oh, no connection from the bat. Leg by called by umpire. Roland Pinto. The 21 for the loss of 2 wicket. So far, the runs are coming in the form of singles here for young friends Urwa. But all singles definitely going to be very crucial in this big final. Fayaz bowling from the far end. Right arm over the wicket bounce. Again improvisation down to final leg region. One more addition, one more over which is completed up. Completion of 4 overs. Young friends Urwa. 22 for the loss of 2 wicket. They're cruising very well. And we are talking about the incoming tournaments and in this particular season. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 3 ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಕರಿಸ್ಪೂನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಬೋಂದಿಲ್. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, and quickly I am going to announce that incoming tournaments, the Festival of Cricket, Kudla Premier League Season 8 will going to commence in this UCG cricket ground in the coming 19th, 20th, 21st and 22nd of December, which is proudly organized by Sri Devi Cricketers Club, registered in association with the Young Friends Urwa and Friends Urwa. Now time to change in commentary box, and I would like to invite Divakar Uppala sir for the further explanation of the match. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ, ಇದೀಗ 11 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು, ಸರಿಸುಮಾರು 14 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಸ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಲಾ ₹1000 ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಇದೆ. ಏಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಡೀಲರ್ ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದರಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1000. ಮುಸ್ತಫಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಈ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಸೊ
ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೇನೋ 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಜೇಬಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದು 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತಮ್ಮ ಓವರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 6000 ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರ ದಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಫೈನಲ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಚುಟುಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಸ್ತಫಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ಸಾಜಿದ್ ತಾನೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಓಟ, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಓಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4-3 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನಕ್ಕೆ 23 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತು. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಅಂಡರಾಮಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆ ಆಟಗಾರ. ಈ ನಡುವೆ ಸಂತು ಆಡಲೆಲ್ಲೋ ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಒತ್ತಡ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅಫ್ರೀದ್ ರವರ 1000ವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ತಫಾ ಈ ನಡುವೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡುವೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಂತು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಮೂಲಕ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ 25. जिस प्रकार हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो सुबह से लेकर देर रात तक इस प्रतियोगिता की विजय में बहुत बढ़िया भूमिका निभाए हैं, चाहे वो व्यवस्था में हो या फिर किसी और में, सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा. इसके अलावा V4 मीडिया माननीय माणिक और इसके नेतृत्व में जितनी भी टेक्नीशियंस है, कैमरामैन है, उनके भी हमारे तरफ से और आयोजन की तरफ से हम धन्यवाद कहना चाहूंगा. ये आखिरी मुकाबला चल रहा है. जी हाँ, 3 तारीख, अब 4 तारीख होने के लिए 15 मिनट से दूर हैं हम. यहाँ ओवर संख्या 5वां शुरू हो रही है दूर वाली छोर से, नहीं 6वां ओवर. 25 कुल मिलाकर रन संख्या है. जानते हैं कि 5 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 5 ओवर में 25 रन बने हैं. 3 विकेट गंवा चुके हैं. स्ट्राइक पर साजिद. नौफल की इस गेंद और तिरछे बल्ले से खेले हैं. इस मैदान पर, इस पूरी श्रृंखला पर गेंद और बल्ले पे काफी संघर्ष चल रहा है. बड़ा स्ट्रोक से ज्यादा सिंगल डबल रोटेट करता हुआ, स्ट्राइक रोटेट करता हुआ हम देखे हैं. इसके परिणाम है कि छोटा स्कोर हो भी फिर भी संघर्ष बहुत बड़ा है. संतू काफी रोमांच, काफी भरोसा है उनके ऊपर और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. इस बीच अगली गेंद लेकर नौफल तैयार और इस बार ऑन साइड पर ड्राइव की है. विकेट के पीछे गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के पास, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार. सो हम चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ कमेंटेटर के रूप में एक और विशेष व्यक्ति है जो राकेश शेट्टी. बीच बीच में उनकी बड़ा आवाज हम इस प्रतियोगिता में पूरी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं. और इस बीच ये अगली गेंद डॉट हो चुके हैं.
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा, नियंत्रण भरा गेंदबाजी। इस फाइनल में चौका चौकों की संख्या बहुत कम देखे हैं हम, इसके वजह से रन संख्या केवल 27, 3 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बार आगे आकर ड्राइव किए हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, गेंद को फील्ड करते वक्त एक ही रन वहां प्राप्त हो सकेगा। परिणाम 28-3। ओवर संख्या छठा जारी है, फाइनल मुकाबला है। और गैलरी देखिए कितना संख्या में तटीय कर्नाटक के अंडरआर्म के प्रेमियों की उपस्थिति है उर्वा की इस मैदान पर। और सीधा प्रसारण में फिलहाल लगभग 4,500 से ज्यादा दर्शक इस फाइनल मुकाबला देख रहे हैं। इस मुकाबले में किसके परड़े भारी रहेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मैच बैलेंसिंग स्थिति पर है। पहला पारी चल रहा है, 28 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। अगली गेंद, और इस बार झनाटेदार स्ट्रोक, हर स्ट्रोक ग्राउंड यानी मैदान के सहारे लेते हुए गेंद चल रहा है। एयर शॉट से ज्यादा ग्राउंड शॉट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसी के साथ ओवर संख्या 6 समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर पर 29 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। 29 for the loss of 3 wicket after the completion of 6 overs. We are watching mega final match of Koti Chennaya Trophy 2023. So wait and see who will be the number 1 team of this competition. So 2,000 rupees will awarded for the batter who hitting the 6 which is shining on Mukambika Finance, which is sponsored by the owner now. One more special announce to the batter. The batter who able to hit a 6 which is shining on Mukambika Finance, he will awarded with rupees 3,000. That's a special reward for the final match. So every opportunity for the batters to collect more than prizes in this tournament. And here is the next delivery. And this occasion, that is a lovely delivery, lovely delivery. It should be from the pair of the batter. Once again, Mustafa. What a surprising attempt by the batter. Looking to hit like a Douglas Murray stroke in underarm cricket, but not connected properly with the bat. And there's a lucky single. 3,000 for the batter who able to hit a 6 shining with the name of Mukambika Finance. Mustafa again, already he got 1,000 rupees from Afreed in the previous over. Every wicket he got 1,000. And this occasion, opportunity to run out. No, I think what happened? It is round out. Yes, wicket gone, I think. जी हाँ, आउट तो जरूर है। और ये तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहा है कि कौन आउट है, शायद सही है रोलैंड जी। तीसरा अंपायर का मदद लिया जा रहा है कि शायद रनआउट के लिए होगा। जी हाँ, ये तीसरा अंपायर का निर्णय आना बाकी है। बहुत बढ़िया कनेक्शन हुआ और बहुत दूर है, बहुत दूर है। रनआउट क्लियर है। पुष्पराज जी, ये तो अंतिम निर्णय आना बाकी है। अंतिम निर्णय आना बाकी है। पुष्पराज पूरी तरह से चारों कैमरा जो कवरेज को पढ़ेंगे और अंतिम निर्णय लेगा। ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಡ್ರೋನ್ ಆರ್ಯನ್ಸನ್ ಆರ್ಟ್ ಇವರ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Sajid out. Yes, that is the decision of umpire or third umpire. Sajid out. Anyhow, wicket number 4 is gone. So ಈ ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೋಡಲು ಕರಾವಳಿಯ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ನಮನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಂತ ಕಿರಣ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ನಮನ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಉಣ್ಣಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿವಾ ಕಿರಣ್ ಅಂಡ್ ಉಣ್ಣಿ. ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅನೇಕ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಉದ್ದರಿ ಪತನ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗ ಬಂದೊಡನೆ ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಪತನ. ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರುವಂತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮೂವತ್ತ 5 ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗನಾಗಿ ಮುನೀರ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟವಾಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳು ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮುನೀರ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ತಫಾ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂತು ಅವರ ಕರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನ ನಡುವೆ ಜಿಂಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಓಟ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ. ಈ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 4-5 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂತು ಅವರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 32ಕ್ಕೆ 5. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಕಳೆಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 5. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಕದನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟವೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಸೋತಲ್ಲಿ 50,00,000, ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ 1,00,000. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ? 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് ഫൈനൽ മത്സരമാണ്. കോട്ടി ചെന്നൈ തുളുനാടിന്റെ വീര പുരുഷന്മാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ പര്യവസാനം കുറിക്കുന്ന തിരശ്ശീല വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വലിയ മത്സരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಪೆನಾಲ್ಟಿ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಏನೋ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಆ 8 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಹಿಲ್, ಮುನೀರ್ ಅವರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಟ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದುವಂತಹ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಓಟಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 48ರಲ್ಲಿ 48 ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಯಕ. ಈ ಬಾರಿ 34ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರ ಚೆಮ್ಮಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ. ತೀರ್ಮಾಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ. Yes, it is wide. No doubt about it. The decision of Roland is perfect.
ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 35. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ಭಾರಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 36ನೇ ಓಟ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಇನ್ನೇನೋ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ತನಕ ಹೋರಾಟದ ಛಲವನ್ನ ಬಿಡದಂತಹ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಸಂತು ಬಂಟ್ವಾಳ. 36ಕ್ಕೆ 5. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಹಾ, ಸಂತು ಈ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ, ಆದರೆ ಈ ಅಪಾಯ 3ನೆಯ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೌಲರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಓಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರ ನಿಖರ ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ Santu Bantwal is out. That is the decision. Yes. Third umpire take their time and decided that it is clean run out. So the opener batter is back to the pavilion after he played fantastic knock. Yes, his contribution is 17 runs. Lovely game. Lovely contribution. And now 37 for the loss of 6 wicket. शाहनवाज नए बल्लेबाज के रूप में उतर रहे हैं और अंतिम क्षणों में 3 गेंद बचे हैं. सत्या जी 3 गेंद बचे हैं. 2 गेंद बचे हैं मेरे ख्याल से. दो गेंद बचे हैं. बिल्कुल सही, 2 गेंद बचे हैं. मेरे साथ में तारीफ करना होगा कि स्कोरिंग विभाग में बिल्कुल कोई ऐसी समय नहीं आए कि कुछ गलती हो. बिल्कुल सही स्कोरिंग विभाग माननीय सत्या जी. इसके अलावा स्वस्तिक सुबह से लेकर और इस बार अगली गेंद जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं स्कोरिंग विभाग में V4 के माणिक है. लगभग 3 स्कोरर इस पूरी श्रृंखला पर उनके हस्तों से स्कोरिंग विभाग आगे चल रहा है. आखिरी गेंद बचे हैं. रन संख्या 38 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद. 38 for the loss of 6 wicket. Here is the final delivery of the first innings of the mega final. Down the track and looking for a big one, beaten completely. Wicket keeper collect the ball, which this should be a very tight decision for the umpire. I think here is the run out.
So yes, single added in the final delivery of the last over, and with the help of that single, 39 for the loss of 7 wicket now. So 39 ಓಟಗಳಾಗಿವೆ, 7 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 40 ಓಟಗಳು ಸುಲಭದ ಗುರಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಆಟ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 48 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಓಟ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. Aryan. धन्यवाद दिवाकर सर, बेहतरीन आंखों देखा हाल पंच भाषा में आपने सुनाया, तो इसके लिए हम सर्व दर्शकों की ओर से और संगठकों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हमें माइक बांटने का मौका जो कि यहाँ पर मिला। और निस्संदेह उर्वा के दर्शक आपको ज़रूर याद रखेंगे कई अरसे तक। तो यहाँ पर ग्रैंड फिनाले मैच
का द्वितीयार्ध अंतिम सत्र शुरू होता है. The last session of this prestigious cricket tournament, Koti Chennaya Trophy 2023 is now going to start. और जहां तक आरंभिक बल्लेबाज का सवाल है, रियाज और नौफल आरंभिक बल्लेबाज, जबकि सामना करने के लिए तैयार रियाज और गेंदबाजी शुरू करते हुए दृष्टि हसन. Exactly 40 the required in 8 overs to clinch the prestigious Koti Chennaya Trophy 2023 for Gori young boys, and their innings now going to start. Drishti Hassan to Riaz, पहली गेंद. First ball of their innings is now coming up. दाईं हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर आते हुए इस बार गेंद तक पहुंचना चाहा. विकेट कीपर संतोष बंटवाल ने विकेट जरूर चटकाया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और गेंद कुछ ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो एक गेंद उनकी पारी में अब फेंकी जा चुकी है और दूसरी गेंद लेकर इस वक्त दृष्टि हसन तैयार. विकेटों को सही करते हुए इस वक्त और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दृष्टि हसन इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद. पहला पावर प्ले ओवर यहां पर जारी और दृष्टि हसन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार रियाज के लिए इनफील्ड क्लियर करते हुए खेल दिया खूबसूरती के साथ. गेंद लोगों सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. पावर प्ले में जो करना चाहिए वही किया रियाज ने. यहां पर इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए फील्डर. देखिए किस तरीके से हुआ था और यहां पर 4 रन रियाज हासिल करते हैं. रियाज जानते हैं पॉजिटिव शुरुआत ही उनको मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है, तो रियाज खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर हैं. तो यहां पर उन्होंने चौके के साथ अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला और इस बीच दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दृष्टि हसन की गेंद रियाज के लिए चिप गया मिड विकेट पर. इस वक्त गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर. जब तक लंबा दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. तो तालियों की गूंज, सीटियों की गूंज इस वक्त गोरी यंग बॉयज के डगआउट में सुनाई देते हुए और रियाज ने ठान लिया है इस वक्त पहले ओवर से ही करारा प्रहार यहां पर करना है, गेंदबाज को टारगेट करना है. तो यहां पर 6 रन जोड़ चुके हैं पहले 3 गेंदों में और दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार उछालना चाहा. नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट. गेंद पहुंची बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे इस वक्त खिलाड़ी, लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए क्रीज पर कदमों को वापस खींच लिया. देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका. अब नौफल एक और बेहतर बल्लेबाज जो कि स्वयं कप्तान है गोरी यंग बॉयज के, इस वक्त मैदान पर मौजूद है और इस बीच गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट दृष्टि हसन. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी. 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और दृष्टि हसन दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला और इस बार ओवर थ्रो नहीं, वहां पर फील्डिंग बेहतरीन बैकअप वहां पर किया गया शशि फील्डर द्वारा और यहां पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. पहले नौफल ने सोचा था कि गेंद को स्वीप किया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए गेंद को हल्के से पुश कर दिया. इस वक्त अजीब ढंग से गेंद को खेल दिया ऑफसाइड पर, जोखिम भरा रन सुरक्षित प्राप्त करते हुए 8 रन बिना किसी नुकसान के. दृष्टि हसन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रियाज के लिए तैयार. यह गेंद इस बार रियाज ने गेंद को उछाला है लोगों पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए. और यहां पर देखने वाली बात यह है, शायद आप रिप्ले में देखेंगे, यहां पर रियाज ने जैसे ही बल्ला उठाया स्ट्रोक खेलने के लिए तो मिड ऑफ के फील्डर ने घूमकर पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया. वो जान गए थे कि रियाज इस वक्त इनफील्ड क्लियर करने वाले हैं और यहां पर देखिए, लेकिन दौड़ने के बावजूद गेंद को वो रोक नहीं पाए. 12 रन पहले ओवर एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फॉर गोरी यंग बॉयज. तो सतीश, यहां पर कहने वाली बात यह है कि गोरी यंग बॉयज को इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए था, गेंदबाज को टारगेट करना चाहिए था और पहले ओवर में 100% वो यश प्राप्त कर चुके हैं. 12 रन 40 रनों का पीछा करते हुए एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कहलाएगी. Absolutely, Gopi. It looks like it's a game plan which is made by the 2 opening batters, that even though they're chasing a small total of 40 to win this match, but they doesn't want to miss the opportunity to get the runs in the power play over. And Riaz Gori once again saying there is in the best of his form. And he's for long years, and 2 to 3 years, he's not in the best of form. But in this season, I think he's got a fantastic start. And that's maybe the good news here for Gori young boys. Riaz playing a similar
cricketing stroke which is played in earlier and 5-6 years back for Gori young boys. Outstanding two cricketing stroke, Gopi. One is which is played exquisite extra cover drive, and one is imperious lofted extra cover drive just over the head of that extra cover fielder. Outstanding start, Gopi. It's an electrifying start here for Gori young boys. एग्जैक्टली सतीश, निस्संदेह इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट यहाँ पर दे चुके हैं रियाज। पहली गेंद लेकर अर्शद तैयार नौफल के लिए। ओ परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी। इस बार गेंद का पीछा करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले और पैर के बीच से निकल गई। न सिर्फ बल्लेबाज को बीट कर गए बल्कि स्वयं विकेट कीपर को भी चकमा दे गए और गेंद को बैकअप किया गया। इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर बेहतर गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं इस वक्त अर्शद। 28 रन चाहिए बचे हुए 7 ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट स्ट्रेट अवे कमिंग डाउन टू एक्जैक्टली 4 रन पर ओवर। और इस बीच गेंदबाज अर्शद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 40 गेंदें बाकी, 28 रन और चाहिए। 40 बॉल्स रिमाइनिंग, 28 more runs now they have to score for victory। और इस बीच अर्शद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अर्शद इस बार नौफल के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। वहां पर रन मिलेगा जरूर लेग बाय के रूप में। 1 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रियाज बैक ऑन स्ट्राइक। पावर प्ले का ओवर इस वक्त जारी है और देखना यह है कि रियाज इस वक्त अर्शद की गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और अभी भी 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और इस बीच गेंदबाज अर्शद तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए इस वक्त ये गेंद इस वक्त अर्शद की धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर रन के लिए 2 कदम आगे दौड़े जरूर, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। परिवर्तन के तौर पर चतुर गेंदबाजी, जस्ट चेंज ऑफ पेस है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार इस धीमेपन पर चकमा खा गया रियाज। बेहतरीन गेंदबाजी अर्शद द्वारा। एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका नहीं, फील्डर थोड़े से पीछे। शशि कवर पॉइंट पर और जब तक शशि गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन बन चुके हैं बिना 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। कुल मिलाकर अब तक ये ओवर अर्शद का बेहतर रह चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नौफल सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद नौफल के लिए बोल्ड आउट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, क्विक पीस ऑफ डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। तो यहां पर 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन बन चुके हैं और पहला विकेट नौफल का गिर चुका है। तो देखिए रिप्ले में किस तरीके से यहां पर हुआ था। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, सम्स एक्सपोज करते हुए गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद बल्ले को वंचित कर सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर टकराती हुई गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। और सतीश, पहला ओवर में जब 12 रन बने थे तब ऐसा लग रहा था गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में अर्शद ने सिर्फ 2 रन प्रदान किए और 1 विकेट भी नौफल का प्राप्त किया। हालांकि एकमात्र रन उन्होंने प्रदान किया है, 1 रन लेग बाय के रूप में बना था। तो यहाँ पर 2 ओवर के बाद 14 रन, तो बेहतर वापसी यहाँ पर अर्शद कर चुके हैं। अब चाहिए 26 रन, गेंदे बाकी है 36 और यहाँ पर चिंता करने की उतनी ज्यादा कुछ विषय बात नहीं है क्योंकि गेंदे ज्यादा है, रिक्वायर्ड रन कम है। तो यहाँ पर कम बैक करना, तो यंग फ्रेंड्स उर्वा को जिस तरह की ओवर अर्शद ने फेंकी है उसी तरीके की बेहतर गेंदबाजी करनी होगी आने वाले ओवर्स में अगर उन्हें कम बैक करना है तो। Exactly, Gopi. After that, a very expensive first over. The captain of the side, young friends Urwa, Arshad, did a great job. He got a ball in his hand and bowled a brilliant over, isn't it? Not only contains the runs, the flow of the runs, but he got a wicket of Naufal, the captain of the opposition. Now I think Gopi looks to be the 26 runs gettable in remaining 6 overs. But the wicket of Naufal certainly will go into open the little bit chance here for team young friends who are to back in the game. Exactly, सतीश। यहाँ पर इस वक्त यंग फ्रेंड्स कुछ हद तक ड्रॉबैक में नजर आता हुआ, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त उनको बाउंस बैक करने का। और यहाँ पर शिवराज का आगमन हो चुका है। स्ट्राइकर एंड पर रियाज मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अल्ताफ बी और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। हमसे दूर वाले छोर से यानी कोटी चन्नैया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज सामना करने के लिए तैयार। कोटी चन्नैया जो कि तुलनाडु के 2 महापुरुष, जो कि जब तक तुलनाडु का अस्तित्व रहेगा कोटी चेन्नई का नाम हमेशा बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर उनके नाम पर, उन दोनों महापुरुषों के नाम पर इस श्रृंखला को आयोजन किया गया है। कोटी चेन्नई सेवा ब्रिगेड रजिस्टर्ड मंगलूर द्वारा श्रीमान किरण कुमार कोडिकल जो कि कॉर्पोरेटर है, इनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक बेहतरीन, एक शानदार प्रगति
करती हुई यहाँ पर, और इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहाँ पर प्रगति पर। और दाहिना हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार रियाज के लिए ऑन साइड पर खेलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, गेंद का बाहरी किनारा टकराने के बाद हालांकि कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर थी, और लेकिन यहाँ पर खाली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाती हुई, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवराज टेक्निकली स्टाइलिश बैट्समैन बल्लेबाज है, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अल्ताफ, ये गेंद इस बार शिवराज के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। शिवराज जानते हैं इस वक्त रन से गेंदों से ज्यादा, गेंदों से कम इस वक्त रन्स बनाने, तो यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट अगर अपनाई जाए तो निस्संदेह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो स्ट्राइक इस वक्त रोटेट करते हुए पहली गेंद पर, और स्ट्राइक इस वक्त रियाज को देते हुए, और अल्ताफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार रियाज। यह गेंद रियाज ने गेंद को खेला, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, बेहतर गेंदबाजी, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज 24/7 चैनल द्वारा, श्रीमान मानिक का इनके सारथ्य में। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हजारों लोग इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का वहां पर मुआयना करते हुए यूट्यूब पर। यह गेंद उछाला स्ट्राइक इनटू द हैंड्स ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर, रियाज का विकेट यहां पर गिर चुका है। और मैं समझता हूं सतीश, यहां पर रियाज ने कुछ हद तक इर्रेस्पॉन्सिबल स्ट्रोक किया है, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, क्योंकि जितने रन्स बनाने हैं उससे 7-8 गेंद ज्यादा है, तो यहां पर इस तरीके की स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रियाज ने इस वक्त प्रेशर ऑफ करना चाहा और गेंद को उछाला, लेकिन प्लेसमेंट गलत और लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया। तो रियाज का विकेट का पतन कुछ हद तक गोरी यंग बॉयज के लिए यहां पर अब ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Absolutely, Gopi, and it's a good move by the captain of Young Friends Urwa, bringing Altaf Basavanagudi, the leg spinner. The leg spinner I already mentioned is very effective under this condition, because they need to take a challenge here, the Young Friends Urwa, because they need to pick the wickets if they wanted to back in the game. That's why they got a slight bit of risk has been taken there by the captain of Young Friends, bringing the leg spinner from the far end. Just that tossed up delivery, Gopi, and just inviting Riaz for the big shot, and he takes the invitation, lofted that one, just like in it's not so easy in the under floodlight to get the distance. And after played a good innings, the small cameo from Riaz, without completing the job, is back into pavilion. And now, certainly, just like we were mentioning about, if you're able to pick another 1 or 2 wickets in a good quick session, then Young Friends will definitely back in the game. Exactly, Satish. There is no doubt about that. अगर 1 या 2 विकेट इस वक्त कम अंतराल में उखाड़ते हैं गेंदबाज यंग फ्रेंड्स के, तो निस्संदेह इस मैच में वो वापस आ सकते हैं। गेंदबाज इस वक्त तैयार, नए बल्लेबाज त्यागराज, ये गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर रन्स नहीं मिलेगा। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ भी बसवनगुड़ी, और यहाँ पर स्कोर रुक चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और अल्ताफ एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद त्यागराज के लिए, जगह बनाकर खेलना चाहा, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा, चूंकि बेहतरीन ओवर की समाप्ति, वन मोर गुड ओवर इन यंग फ्रेंड्स उर्वा's पॉइंट ऑफ व्यू कैप्टन। तो सतीश, पहले ओवर में दृष्टि असर के 12 रन बने थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 2 रन बने, तीसरे ओवर में भी 2 रन बने, और इन 2 ओवर की बदौलत अब मैं कहूंगा यंग फ्रेंड्स उर्वा इस मैच में वापस आ चुका है। Well, Gopi, and absolutely, but just maybe that thinking about the Gori young boys, where the things went wrong after getting 12 runs in our first over. I think the Gori young boys very much, almost 60% of the game they got in hand. But in the 2 overs, maybe irresponsible batting performance. Just like you mentioned, Riaz, Gori, no need to panic at all in that occasion to going for the big shot. That's why now they looks like they're under pressure. And now, in this situation, if we see that the captain's move from the Young Friends Urwa, after bringing a leg spinner from the far end, now thinking about this man, the magician for Young Friends Urwa, he did a great job so far for the tournament, for the success of Young Friends Urwa in the bowling department. Santosh, if Santosh ball one more good over here, then it's going to be a very, very good match in front of you spectators. Exactly, Satish. यहाँ पर संतोष खुद अपने आप को गेंदबाजी पर ला चुके हैं, और यहाँ पर पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर, स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड। तो एक और बेहतर ओवर यंग फ्रेंड्स के गेंदबाज फेंकते हैं, तो यहाँ पर निस्संदेह दबाव गोरी यंग के ऊपर पड़ सकता है। फिलहाल चिंता का कोई विषय अभी भी नहीं है, 30 गेंदों में 24 रन चाहिए विजय के लिए। ये गेंद इस बार लेग कटर ड्राइव किया, सेंसिबल, दैट्स द थिंग्स ही हैज टू डू एट दिस सिचुएशन। और इस बार गेंद को ड्राइव किया गेंदबाज की दाईं ओर से मिड ऑन पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। रात के 12 बजकर
20 मिनट यहाँ पर बच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शकों की तादाद इस मैदान में काफी मात्रा में दिखाई देते हुए मैदान में लगभग अभी भी दर्शक भर चुके हैं। और ये बात ये दर्शाता है अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर में, खासकर इस क्रिकेट काशी उर्वा क्रिकेट मैदान में कितनी जनप्रियता लगता है। लॉट्स ऑफ क्रिकेट में ये गेंद इस बार बोल्ड ऑफ हिज लेग्स, बोल्ड ऑफ हिज लेग्स। त्यागराज की पारी समाप्त। पहली गेंद ऑफ कटर के तौर पर फेंकी थी और यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर दूसरी गेंद लेग कटर के तौर पर फेंकी। यहाँ पर धीमी गेंद और इस धीमेपन पर चकमा खा गया त्यागराज। गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई मिड लेग स्टंप पर, बिल्स गिल्लियां डिस्टर्ब होते हुए। और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका। तो सतीश यहाँ पर गोरी अंगवाज के बल्लेबाज विकेट गंवाते हुए और हर विकेट के पतन के साथ अब दबाव उनके ऊपर बढ़ता नजर आता हुआ। Just like I mentioned, Gopi, earlier, when Santosh came into attack, I told that this man can do something special from his bowling because he's really enjoyed his bowling throughout this tournament. And being the experienced campaigner for the side, and Santosh bowled one of his best weapon, is always loves to use the leg cutter, and that ball is around the legs of Tyagaraja. He not really have any clue at all where the ball is turned and how the ball hits the stumps. Now 3 wickets back into pavilion, Gopi, but still Gori young boys, they got a lot of depthness in their batting department. And especially this man came into the middle is none other than Abhilash. Is a lot of experienced campaigner as well as a technically very sound player. Now all up to these two batters of Gori young boys, Shivaraj and Abhilash, the very experienced campaigner, have to play responsible innings for Gori young boys. Exactly, सतीश, इन दोनों को जिम्मेदारी भरी पारी इस वक्त खेलनी होगी। इस बार लेग स्टंप पर आते हुए फ्लिक करना चाहा ऑन साइड पर, गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलती हुई। परिवर्तन के तौर पर तेज ऑफ कटर गेंद इस वक्त संतोष ने फेंकी थी और संतोष का प्रदर्शन इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में काफी बेहतर रहा है और पिछले मैचेस में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया और इस फाइनल मैच में भी उस बेहतरीन प्रदर्शन को वो आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार लेग कटर गेंद थी इस वक्त अंतिम क्षण में। यहाँ पर फील्डर चुके, बैकअप होता हुआ, लेकिन दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ग्रैंड फिनाले कोटी चेन्नैया क्रिकेट ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है कोटी चेन्नैया सेवा ब्रिगेड रजिस्टर्ड मंगलूर ने। और निस्संदेह ये श्रृंखला इस देर रात में भी एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए। और इस बीच संतोष तैयार, स्ट्राइक पर शिवराज और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यहाँ पर फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलती हुई। दाहिना तो ओवर द विकेट संतोष की गेंद, ये गेंद इस बार शिवराज के लिए सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। ऐसा क्रिकेट सिर्फ शिवराज ही खेल सकते हैं क्योंकि तकनीकी तौर पर वो एक बेहतरीन बल्लेबाज जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद आई थी और किस तरीके से गेंद की टर्न को भापते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खाली क्षेत्र विकेट एरिया चुनते हुए पुश कर दिया और एक रन के साथ छोड़ यहाँ पर बदलते हुए 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन और बनाने हैं। और गेंदबाज संतोष तैयार, ये गेंद इस बार अभिलाष के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस के लिए दौड़ पड़े, शिवराज के लिए खतरा, लेकिन नहीं, निशाना यहां पर चूकता हुआ 1 रन का इजाफा। और गेंद जिस तरीके से अंतिम क्षण में उछाल ली थी वहां पर थोड़ी से विचलित हो गए थे अभिलाष, लेकिन कोई क्षति नहीं, 1 रन मिला। 4 ओवर की समाप्ति 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 19 to get 21 for 3 after completion of 4 overs, half the way mark, still half have to go, that means 4 overs remaining। 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल बाकी, आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी। 19 रन चाहिए और मैं समझता हूं सतीश यहाँ पर 4 ओवर में 19 रन बनाने के लिए गोरी यंग बॉयज को इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी करनी होगी। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी। पिछले 3 ओवर में जितनी बेहतरीन गेंदबाजी उनके गेंदबाजों ने की है उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी अगले 4 ओवर में उन्हें करनी होगी अगर गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डाला। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा इस ग्रैंड फिनाले कोटी चेन्नैया क्रिकेट ट्रॉफी 2023 का एक शानदार प्रगति करता हुआ और एक रोचक अंत की हम यहां पर उम्मीद अपेक्षा करते हैं। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। इस श्रृंखला में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त सतीश को अंग्रेजी में। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And yes, the climax still remaining very exciting because 19 runs required in remaining 24 deliveries, and young friends are definitely they were not really going to give this match very cheaply for the opposition. Just a comparison after completion of 4 overs, the same stage, young friends are 22 for the loss of 2 wicket and Gori young boys 21 for the loss of 3 wicket. Not a big difference. And there's only 1 run difference, but the fall of wickets also the 1 difference between these two teams. Nicely placed it down to deep wideish long on revision for a single by Abhilash for the first delivery ball by Altaf Walpadi. Shibalaj. A delivery correction, Altaf Basavanagudi, not Walpadi.
Again, Altaf from the far end. Right arm over the wicket to Shivaraj. What a shot. Great shot. Absolutely. It's far off the wicket. He played that one right in the gap, running for the second, and they complete it. Just like my friend Gobi is always mentioning about whenever the Shivaraj coming to bat, it's really going to be a, yes, Shivaraj batting in the middle. And I think it's going to be a prize to watch, isn't it? It's really great to watch whenever he's playing that kind of cricketing strokes. Technically very sound. And copybook style of cricketing stroke came from the bat of Shivaraj. 24 for the loss of 3 wickets. Loose delivery, lofted that one, and is gone. This is what you're talking about sometime, Gopi. This is a lollipop delivery, but sometime it's going to be very effective. And Basavanagude is saying thanks God for that huge wicket, because this is not a wicket taking delivery, but sometimes the situation is asking even the technical sound player slight a bit of seeing that the short pitch delivery. I want to hit a one big shot, but it's not good enough for Shivaraj to get the distance, but the fielder just waiting for that catch, and he completed that catch as well. It's a 24 for the loss of 4 wickets. We are talking about in this particular tournament. And thanks to our co-commentators, special thanks to Divakar Uppala. He came from long way, our neighboring district and neighboring state, Kerala and Kasaragod district. He's not only the cricket commentator, but he's an all-rounder. Just like we mentioned as the commentator for Kabaddi, tug of war, everything. The volleyball is an all-rounder. The many sports is absolutely fantastic commentator. So thank you very much, Divakar Uppal sir, your cooperation for this success of this cricket tournament. And special thanks to Rakesh Shetty, and from morning to till night did a great job in the main stage, inviting chief guests. It's not so easy job, and thank you very much Rakesh Shetty for your cooperation for the success of this Koti Chennaya Trophy 2023. Meanwhile, Basavanagude will going to continue, and the new batter that came into middle, Mustafa. Nicely flat one, that one to square leg region. Prajwal is the batter. He came into middle and straight away is off the mark with a single. And with the single, scoreboard numbers on to 25. The quarter century coming up here for Gori young boy. Still 14 more runs required for the victory. 15 led to correction. 40 which is going to be a target. Again, Altaf bounced. Again, they wanted a single. That chance of run out. Oh, Santosh hits a stamp and he got the wicket. Looks like Prajwal. He knows that he might be the shot of his crease, but Arish Patel straight away asking third umpire to check whether the batsman safe or not. And Gopi, if it is a out, then just like I mentioned, young friends will Urwa will not going to give this match very cheaply for Gori young boys. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर अगर ये विकेट गिरता है रनआउट के रूप में तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज के लिए काफी भारी पड़ेगा। और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है। प्रज्वल की पारी समाप्त रनआउट के रूप में। जब निशाना समसो पर टकराया था, प्रज्वल का बल्ला यानी बैट हवा में था, द बैट वाज इन द एयर, और यहाँ पर प्रज्वल का विकेट गिरना गोरी यंग बॉयज के मुश्किलों को और यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, संतोष ने देखा, बाद में निशाना दागा और बल्लेबाज का बल्ला हवा में था, बैट वाज इन द एयर, और यहाँ पर प्रज्वल का विकेट गिर जाने के बाद अब जैसा कि आपने फरमाया यंग फ्रेंड्स उर्वा आसानी से मैच को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आमतौर पर देखा गया है यंग फ्रेंड्स उर्वा फाइट बैक करने में माहिर है, और यहाँ पर फाइट बैक करते हुए 5 विकेट उखाड़ चुके हैं गोरी यंग बॉयज के। दबाव गोरी यंग बॉयज के ऊपर 19 गेंदें बाकी हैं और 15 रन चाहिए। 15 रन टू गेट फ्रॉम 19 बॉल्स, और निस्संदेह यहाँ पर गोरी यंग बॉयज को मंजिल की ओर बढ़ना है तो यहाँ पर एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप जरूर निभानी होगी। Exactly, Gopi. The partnership is a very important year for Gori young boys to win this match. The Karna, he's also got a very good tournament from the bat. So far, he did a great job for Gori young boys. If you see that Gori young boys in the big final, and this man really contributed from the bat. And now the final time he need to contribute if he wanted to lift the prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. And Karna straight away is off the mark. You know exactly he's dealing with the leg spin bowler. So it is a very good technique to implement to sweep the ball against the leg spin bowler. And he got a success as well. And he will going to retain the strike for the next over after completion of over number 5. It's 26 for the loss of 5 wicket. 14 more runs required for the victory in remaining 18 balls. What a match.
But one time, Gopi, when it's a 12 runs which is scored in the first over, everyone thought that it might be a Gori young boys will going to win this match very easily. But there slight a bit of negligency. Irresponsible cricketing stroke came from Naufal. Inside out cricketing stroke is trying for. After that, Riaz looks like he will going to play a long innings, but unfortunately he is also back into pavilion. After that, young friend Urwa strongly back in the game by picking up wickets in a frequent intervals. Now, this is going to be a very crucial over for Gori young boys as well as young friend Urwa. From the young friend Urwa perspective, if they wanted to win this match, if Santosh will going to pick the wickets here in this over, and it's going to be dangerous for Gori young boys. Oh, there's a lovely inside-out cricketing stroke there from Karna, which is a very dangerous, isn't it, Gopi? Just going back against a turn of Santosh. And have a look at the Santosh. He is the surprise, saying that how well Karna has managed to play that ball into cover point region. And both are very good friends, isn't it? They're changing the words, but it's not a words which is changed. It was absolutely friendly natures both has got. And it's a 27 for the loss of 5 wicket. Santosh again, right arm over the wicket balls. Again, delivery which is called to be a wide. Umpire Arish Padil very strict. You know exactly that ball is going to be a wide. The batsman Abhilash wanted to flick that one off his legs. Missed the line completely, but umpire not missing here to signal the wide. 28 for the loss of 5 wicket in the over number 7 in correction. 6 in progress. Driven nicely down to deep long on division. Abhilash is a key player now. After he lost the wicket of Shivaraj, now all up to this man, Abhilash, to play some responsible innings, isn't it? And here is Santosh, right arm over the wicket balls. Wanted to sweep that one, missed it completely. Wicket keeper, of course, Santosh is just searching for the ball, but no danger at all. The batter's not really interested for the run. 29 for the loss of 5 wickets. 11 runs required. This is a great technique there from Karna to get the ball into the fine leg region. Just almost sitting in his knees to get that one due to deep square leg region for a single. 30 on the board. 10 runs required for the victory in remaining 14 balls. Again, Abhilash. He's so good in that. You know exactly, he's the right man to deal with in this condition. To rotating the strike is concerned. And one more single has been added to total. So far, Gopi, in this particular over, both the batters played sensibly. And a little bit frustration here for Santosh that the runs are coming in this over. This time again, one more. They're going for the big single chance. No, my goodness, it's gone. Abhilash gone. 6th wicket is back into pavilion unnecessarily. They wanted to steal that single, but doing that against Santosh Bantwal. He is not a big hitter of the ball, but he is a very good sharp shooter as well, Gopi. The second time he's hitting the stumps, and a big wicket is back into pavilion. It's a 31 for the loss of 6 wicket. Now it will go into any chance, Gopi. Now last 13 balls remaining. 12 over which is completed. That means 2 overs remaining. 9 runs required for the victory. 4.5 runs per over which is required. But this is not a big problem. The problem here for Gori young boys is that they got only 4 wickets. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 4 विकेटें सिर्फ बाकी हैं, सुरक्षित हैं। और यहाँ पर अंतिम गेंद पर जो रनआउट हुआ, अभिलाष और करना ने दौड़ लगाई थी। यहाँ पर रन उतना जरूरत नहीं था, इतना जोखिम पर रन लेने की जरूरत नहीं थी। गेंदे काफी पड़े हुए थे और यहाँ पर जोखिम पर रन लेने का प्रयास किया और आखिरकार अभिलाष ने अपना विकेट गंवाने के बाद पेविलियन वापस लौटते। तो निर्णायक मोड़ पर यह विकेट पतन हो चुका है अभिलाष का। अब ऐसा कहना पड़ेगा 4 विकेटें सुरक्षित है। 2 ओवर में 9 रन चाहिए, 12 गेंदों में 9 रन चाहिए। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, रनों के बारे में कोई चिंता नहीं है, इस वक्त चिंता का विषय है विकेटों का। तो 4 विकेटें सुरक्षित है। और यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उर्वा का जहां तक सवाल है, इस वक्त उन्हें विकेटें उखाड़ने पर ध्यान देने होंगे। और जहां तक गोरी यंग बॉयज का सवाल है, मैं कहूंगा उनको विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान देना होगा, बल्कि विकेटों की सुरक्षितता के साथ इस वक्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर अपनानी होगी अगर उन्हें अपने मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो। Exactly, Gopi. And the 9 runs is not a big ask, to get 12 runs. But here is 2 new batters out there in the middle, Karna and Mustafa. Now, captain of the side is brought into attack from the far end. Left arm, Rashad balls, appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Maybe the impact of that line of the ball when ball hits front foot of Karna, it is outside the line of off stump. That's why umpire Roland Pinto rightly so not interested. 1 dot ball. And we'll go into
create the pressure in the mind of the batter. 11 balls remaining, 9 runs required for the victory. What a match. Ashad again. Balls. Oh! Wow, good stop. Absolutely good stop. You need to appreciate this man, the Rajesh Hova, because he not only need to deal with that ball, but a dog which is in front of that fielder. This is really a fantastic job, isn't it? If the ball will going to hit the dog, then ball definitely will going to change the direction. And it was an absolutely fantastic one. Just I want to see it in the replay. Have a look at that one. They wanted to sweep the ball. And have a look at this. Absolutely very good diving stop here from Rajesh. Now umpire asking for the third umpire for maybe that's for the wide. They wanted to see that maybe the call from the batter of young friend Urwa, it might be a wide or not. Now umpire Pushparaj will go in to give the decision here. And now Govi, and so far, especially in this particular tournament, all umpires did a great job. And leading from the front, Roland Pinto, sir. It's not a wide. Umpire called it's a fair delivery. Ball is just passing under the bat of the batter. And the right decision which just came from umpire Roland Pinto. And Gopi, being the experience is not important, but being the experience and handling the pressure in the matches like this, the bigger final, the pressure is not only for the players, but even the pressure for the umpires and even for the commentators as well. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर सबके ऊपर दबाव है, अंपायर्स के ऊपर दबाव, खिलाड़ियों के ऊपर दबाव और हम कमेंटेटर्स के ऊपर भी यहाँ पर दबाव है. तो यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया, अनुभव रहना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दबाव को झेलना भी जरूरी है. और यहाँ पर जो दबाव को झेलेगा वही अपने टीम को मंजिल तक पहुंचाएगा. तो यहाँ पर दबाव को झेलने की जरूरत है और देखना यह है कि कौन सी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर दबाव को झेल पाते हैं, गेंदबाज या फिर बल्लेबाज. Absolutely, the two dotted deliveries to start with. They were going to be a chance of run out. Oh, what this? Absolutely, Shashi. Maybe in under flight light he is not seeing his bowler. And maybe that I think the ball is just slipped out of the hands of Shashi, and that's why the ball is went towards the fielder. But I think it's a fantastic piece of. So once again, oh, ball him, clean him up. Ashad got a golden wicket here. And Karna back into pavilion now. Gori young boys looking in a trouble. Now have a look at the crowd, Gopi. Have a look at the delivery. Absolutely fantastic incoming delivery there from Ashad. This is what I'm talking about, Gopi. Young friend Urwa has got a history of bouncing back. And I already told that they will not going to give this match very cheaply now. 7 wickets back into pavilion. Still they have to get another 7 runs to win this match. The match is still in balance. Exactly, सतीश. यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी अपनानी चाहिए थी, यहाँ पर करना नहीं. देखिए, पहले देखा कि गेंद को खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की टर्न को भापते हुए देखा कि रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला जाए, लेकिन इन दोनों प्रयत्नों में सफलता उनके पक्ष में नहीं आई और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते उनके पैरों से बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स पर टकराए. काफी ज्यादा टर्न, काफी ज्यादा घुमाव ली थी ये गेंद और इस गेंद पर अरशद विकेट प्राप्त कर चुके हैं. अब 8 गेंदें 7 रन, सिर्फ 3 विकेट सुरक्षित. तो अब ऐसा कहना पड़ेगा, मैच इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन. Absolutely, Gopi. The match is going to be anybody's game here because the condition looks to be a very, very tense. The very, very tense moment out here in USLG cricket ground. It's going to be anybody's game. Arshad, being the captain of the side, so far did a great job. He got a huge wicket of Karna. Now he's not really happy with the field set. Rajesh, who is standing at short fine leg region, maybe he was wanted to coming very close to the batter, but Arshad doesn't want to take any risk. He's sending him back in the right position. That was a short fine leg region. Arshad. Bowling from the far end. 7 required for the victory. Hold him! Clean him up! 1 more wicket is back into pavilion. Young friends of Urwa, they're strongly back in the game. It's 33 for the loss of 8 wicket. Inside edge of the bat. Hits the stump. And 1 more wicket is back into pavilion. What a match, Gopi.
This is a perfect example why the cricket is game of glorious uncertainty. स्पेशली इन अंडरआर्म क्रिकेट सतीश। तो जहां तक सवाल है, यहाँ पर देखिए पिछला गेंद काफी धीमा फेंका था, परिवर्तन के तौर पर यह गेंद काफी तेज फेंकी थी, एक्स्ट्रा क्विकर। और जिस तरह पिछले गेंद पर करना धीमेपन को समझ नहीं पाए थे, गेंद के धीमेपन को, उसी तरह इस गेंद पर गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज। और जब तक वो गेंद पर कुछ करे, गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे स्टंप्सों पर टकराए। ऐसा कहना पड़ेगा, स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया था, जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स, जस्ट ड्रैग डाउन ऑन टू द स्टंप्स। और 8वां विकेट गिर चुका है। अब 7 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए, 2 विकेट सुरक्षित। और यहाँ पर आज जितने भी मैचेस खेले गए सब मैचेस बेहतरीन रहे, और ये मेगा फाइनल मैच भी एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। तो फाइनल जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का फाइनल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निस्संदेह आज दर्शक, मैं कहूंगा, काफी प्रसन्न होंगे इन बेहतरीन मैचेसों को देखते हुए। Absolutely, go with the kind of final we're expecting from these two teams. The same which is going in the middle. Now 7 balls remaining, 7 runs required. A hat-trick delivery. Oh, it's a slum in front of wicket. He got a hat-trick. Harshad got a hat-trick of this tournament. He's back into pavilion. It's 33 for the loss of 9 wickets. What a fantastic bowling display here from Arshad. Being the captain of the side, he got the beautiful delivery. Have a look at that delivery. Absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. He's almost covering the same. Have a look at that. It's the back leg. Absolutely flum. The umpire Roland Pinto has got no hesitation in his mind to raise his finger. Now, Gopi, what you would like to say here? This is a cricket. Especially we are coming to the UCG cricket ground. We are witnessing lot of examples like that, isn't it? And that's why I'm talking. Once it was a 12 runs in the first over, maybe some spectators left the ground. It's all over. Maybe after seeing the live telecast in YouTube, maybe some spectators still occupying the places in the UCG cricket ground. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली ड्रामेटिकल कोलैप्स हैपेंड इन गोरी यंग बॉयज इनिंग्स। और अंतिम 2 ओवर में कम से कम 4 या 5 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं। और इस नाटकीय पतन की वजह से यहाँ पर इस वक्त गोरी यंग बॉयज काफी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ, और यंग फ्रेंड्स उर्वा इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ। 6 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए, अंतिम जोड़ी मैदान पर। और यहाँ पर देखते हैं इस मैच का अंतिम ओवर, इस श्रृंखला का अंतिम ओवर, द लास्ट ओवर ऑफ द टूर्नामेंट। इनफैक्ट यहाँ पर ये खिताब कोटी चेन्नैया कप 2023 का प्रतिष्ठित खिताब, प्रेस्टिजियस टाइटल किसके पक्ष में जाता है। लेकिन 6 गेंदों में 7 रन बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अंतिम जोड़ी मैदान पर है, तो ये एक ड्रॉबैक है। अंतिम जोड़ी अगर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो 6 गेंदों में 7 रन बना सकते हैं, लेकिन इस 6 गेंदों में 7 रन बनाने के लिए उनके बल्लेबाजों को इस वक्त काफी मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। तो संतोष बंटवाल इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, और देखते हैं सतीश इस टूर्नामेंट के अंतिम ओवर में क्या होता है। Well, Gopi, the man, of course, we are talking about just 7 runs required from the last over, 1 wicket in hand, but you need to notice that who is the striker. Mustafa. He played a very good innings in the first match. Didn't got opportunity in the second match. Now he can prove that he can be the match winner for Gori Young Boys, because 7 to get. He's a striker, and wait and see how well the Santosh will going to manage. How well he going to handle the pressure here. It's a very interesting move from the captain of the side. They're bringing Santosh. I think so far Santosh didn't bowl. So far he didn't bowl for young friends Urwa, and now in this mega final he got a ball in his hand. Will it going to be a risk which is taken by the Gori young friends Urwa captain? Will it going to be effective or not? Wait and see. The time exceeds. They need to bring one fielder inside the ring. Young friends Urwa need to, yes, they exceeds the time limits. That might be the opportunity here for the batter to take the advantage of that fielding restriction. 7 to get from 6 ball. Backward point, short third man, short extra cover, deep cover point, short square leg. Here is the first ball, 7 to win. Oh, this time, they appeal for leg before it. Oh my goodness, they're not going for the run. Might be that ball is very close to the stumps. Umpire saying nothing has happened here. But maybe that ball is very close to the stump. It is a off-cutter. It's not a leg spin bowling, but his action looks like he's bowling a leg spin. Have a look at that one, a replay. Oh, it's very close to the stumps. Very close to the stumps, isn't it?
Shashi thought it might be a bold. The wicketkeeper behind the stump. Now 5 balls remaining. 7 runs required for the victory. Mustafa is on strike. Right about there. One more fantastic delivery. One more fantastic delivery. Now 4 balls remaining. 7 runs required for the victory. 6 for tie. This is always going to be a difficult bowling action, isn't it? Bowling looks like he's bowling a leg spin, but not he's bowling a leg spin, but we're bowling off spin, and that's why the batter a little bit confusion here. Now 4 balls, 7 runs required for the victory. The match is absolutely still looks like it's going to be anybody's game. Oh, this time is a golden opportunity here. The golden opportunity for the batter because the line of the delivery is outside the line of leg stump. And Mustafa has got a fantastic position to hit the ball, but he misses the ball completely from his bat. 3 balls remaining. 7 runs required for the victory. Still, Mustafa got an opportunity here. Fine leg fielder, square leg fielder going back to deep square leg. Deep cover point fielder coming inside the ring. 1, 2, 3, 4, 6 fielders. The 5 fielders inside the ring to saving the singles. The pressure is building up. 7 to get from 3 balls. Here you go. Right arm over the wicket. Drives that ball. No, he missed it. He missed it. 2 balls remaining. 7 runs required for the victory. 6 for tie. Will it going to be a one more super over, Gopi? If it's a 4 in this delivery, then they need to get 3 in the last ball. The Venkatesh Bandari, one of the supporter, Venkatesh Pujari, the supporter of Andram Cricket, announcing rupees 5,000 for Arshad Bajal. 2 balls, 7 runs required for the victory. Here you go. Decider delivery. Coming down the track. Not quite getting hold of that one properly. Last ball remaining. 6 required for the victory. Gopi. We are expecting Mustafa will going to do something special, but he fails in the 5 deliveries. But this young man, Sahil, he's got opportunity to become the hero, not only for this particular day. If he able to hit a 6, he will going to, the spectators, the cricket lovers, will going to remember his name for a long time. डेफिनेटली सतीश, अगर अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हैं बल्लेबाज साहिल तो निस्संदेह इस श्रृंखला के हीरो वो बन जाएंगे और कई सालों तक इसका वो याद रखेंगे. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और छक्का अंतिम गेंद पर लगाते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर इस श्रृंखला के हीरो बन जाएंगे. तो यहाँ पर छक्का लगाना उतना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है इन हालातों में. और अंतिम गेंद लेकर संतोष इस वक्त तैयार. देखते हैं क्या होता है इस अंतिम गेंद पर. 6 रन चाहिए. Here we go. 6 of last ball. Absolutely, the last and final delivery of this tournament. 6 for the victory for Gori young boys. Here you go, coming down the track, misses the line completely. Young friends Urwa, the becoming the champion of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. Celebration begins. So Arshad will going to get 5,000 rupees, which is announced by Venkatesh Pujari from Bangalore. Thank you, sir. Thank you very much. Umesh Nandagiri, sir, the witnessing in this big final. And now we're straight away coming to the presentation ceremony, post-match presentation ceremony. Congratulations, winners, young friends, Urwa. Congratulations for Gori young boys as well. Of course, they played a very good game of cricket after they getting 12 runs in the first over. Then looks like they will going to win this match. But this is a cricket, what you are talking about. And young friends Urwa surprising everyone with their performance, and they deserve the champion of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. That's it from the commentary box. I would like to give special thanks to organizers, and especially I would like to mention the name.
ಹೆಬ್ಬಾಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ 2,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು 2,000 rupees 2,000 he will go into collect. ಅಫ್ರೀದ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚುಟುಕಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಫೈನಲ್ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತದನಂತರದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಯುವ ಪಡೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V4NEWS 24x7 ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ ಇವರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ V4NEWS 24x7 ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಮೈದಾನ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೈದಾನ ಇದು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ UFC ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ
ಯುವಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕ, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮನಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂದು ತಂಡ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಇದೀಗ ಸರಿಸುಮಾರು ನಡುರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವವರು, ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂವರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಮೂವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೋಲಾನ್ ಪಿಂಟೋ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್, ಈ ಮೂರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. Thank you so much, Rakesh Shetty, and did a great job. A big hand for Rakesh Shetty because he is the one responsible for the success of the cricket tournament because it's not so easy to handle the pressure in the main stage. Thank you very much. So now I request, yes, Roland Pinto, sir, please come forward. Big hand for Roland Pinto. This tournament, which is becomes very successful because of the three fantastic umpires. Roland Pinto, sir, 39 years which is completed. He is in the 40th year, and a big round of applause required for Roland Pinto, sir. And he will go in to collect the memento and token of gratitude from our chief guest. And secondly, I request Harish Padil, sir, one more very experienced umpire, did a great job for the success of this cricket tournament, and 30 years of experience in both underarm and overarm cricket. And I request Pushparaj BM, please come forward. So big hand for Pushparaj BM. He is not only a very good umpire, but he is running a Jugul Sports Academy, training the youngsters, and he is a very good coach as well. So big hand for Pushparaj BM.
did a great job for the success of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. Yes, now it's a time to invite. Before that, yes, we have a special voice today, isn't it? In UCGK kickdown, the multi-languages, it's not so easy to announce and fluent. Absolutely, we need to appreciate because it's a fluence in every languages, and it's going to be a great pleasure for having him in our commentary box, and we got a lot of experience from him. And please welcome Mr. Divakar Uppala, did a great job in the commentary box. I request Kiran sir to, yes, our chief guest to present this memento. Pritam Kumar to present the memento for Divakar Uppala, did a great job for the success of this cricket tournament. Now it's a time to announce, yes, my friend, absolutely Gopi, you need to come here. Yes. This is a Santosh favorite, that is a Maidan to kacha kach bad chuka hai. And Gopi will go into collect memento. And big hand for Gopi is entertained today with this fantastic and golden voice. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ಸಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ರವರೇ. ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 13ರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ finest international language commentator, my close friend Mr. Satish Salian. I request please raise the memento. Really great honor. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸತೀಶ್ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ರವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾಗಾರನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ. Yes, it's one of the difficult job and scorer and throughout the tournament. I would like to invite Satya Swarup. The big hand for Satya Swarup, did a great job. The man behind the screen and did a great job for the success of this cricket tournament. Please welcome Satya Swarup. So big round of applause is required here for Satya Swarup. Did a great job in the scoring department. Thank you. Yes. One more encouragement. The prize money. The first Gopi ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ 29 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 250 we are together did the commentary and in our 30 years experience first time hearing that recognition. ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿ 2023. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 6 ಹೊಡ್ರೆ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಸೊ there's a big I think thanks to Rohit sir for recognizing us. Not only they recognize the commentator but they recognize the umpires as well, and even the scorer. So I request one of anyone on behalf of official, please come and collect our prize money. Gopi, please come. Yes. On behalf of official, Roland Pinto sir. Is here. Yes. Yes. Thank you very much. Thanks for the recognition.
Yes. Now it's our time to announce the individual department. But here's one more different concept is implemented in Koti Chennaya Trophy. And we are recognizing throughout the tournament the performance. But here the special announcement which is made when final is started. And we are going to notice the best performance in the mega final. And that is the best wicket keeper, the best batter, and the best bowler. And now I would like to announce the best wicket keeper first, because the Rohit himself is a very good wicket keeper. So being the very good wicket keeper, you need to, yes, encourage the wicket keeper. Now, any guess the best wicket keeper of the final? Absolutely Santosh Bantwal, responsible for the 2 run out with his sharp shooting. And I request Prashant, Santosh Bantwal to please come forward and collect your encouragement prizes from Rohit sir. The wicketkeeper presenting the prize money for the one more wicketkeeper. This has been a fantastic concept. Now it's a time for announcing the name of best batter of the final. Of course, best batter means the batter one who got the highest run in the big final. He will going to be the best batter. And Santosh just observing me whether he is calling my name or his name. But you are the one who's got the highest run of this in the bigger final. Santosh Bantwal once again is the best batter of this tournament. Rohit sir will go in to present the prize money. So thank you very much. Congratulations, Santosh. Today, a day which belongs to him. And now it's a time for announcing the best bowler of the final. Absolutely hat-trick in the mega final. Arshad of Young Friends Urwa, the captain of the side. I request, please come and collect your prize money. Arshad. ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Hanif will go in to collect a cash prize on behalf of Arshad. So big hand for Arshad for the wonderful performance. Yes, straight away without wasting a time, we are coming to the individual department of throughout the tournament. And first I would like to announce the man of the match of the mega final. Any guess? Santosh Bantwal, Pura Regondenja. Yes, the final match, man of the match, which goes to once again Arshad of Young Friends Urwa. So Ani, please collect the cash prize and a memento from our chief guest, the man of the match of the final. Harish Shetty Mumbai will go in to present this memento and a cash prize for Arshad. The next one, the best batter of the tournament. Yes, it's a Santosh Bantwal of a Young Friends Urwa. I already told the day which belongs to him, grabbing the most of the individual prizes. Harish sir will go in to present the beautiful memento and the cash prize for Santosh. He is the best batter of the tournament. So best bowler of the tournament goes to, any guess? Highest wicket getter. Again, it's Arshad of a Young Friends Urwa. I think he misses the golden opportunity, Arshad. Vikram Kumpala will go in to present this award and cash money for Arshad for his wonderful performance. Now we are going to announce the king of all individual department, absolutely the man of the series of the tournament, which goes to ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂಡಾರು ಕುಡರ ಬಂಡ್ಲೆ. Absolutely, the Mustafa of Gori Young Boys is becoming the man of the series. I request Varun Chowta sir to present this man of the series to Mustafa for his outstanding performance from the bat, from the ball.
and he is definitely going to be the man of the tournament. Koti Chennaya Trophy 2023. Congratulations for all individual winners of this prestigious cricket tournament. Now is the time to announce the huge one. The waiting is over. Yes, before the start of the match, no one is. Yes, imagine that Gori young boys will going to come to the final, but they're upsetting everyone and played a magnificent game of cricket, and they came into the final. Almost looks like they're going to touch that winners trophy, but unfortunately they just lost the momentum after they got a very good momentum in the first over. They got a 12 runs, but they lost the match. But they won the heart of cricket lovers. May I request all the players of Gori young boys along with the captain, please come and collect your very attractive runner-up trophy. Along with that, they will going to collect a huge cash prize of rupees 50,000. So big hand for Gori young boys. Leading from the front, Riaz is played a fantastic batting performance in the tournament. Shivaraj, the captain of the side, Naufal, Abhilash, Mustafa Tyagraj, the young Sahil, the Karna, the very good finisher of the match. All 11 players did a great job to become the runner-up of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023. So very good start for the season for Gori young boys. In UCG cricket ground, lifting the runner-up of this prestigious Koti Chennaya Trophy 2023 from all the dignitaries present here in the stage, the presentation dais. So congratulations, Gori young boys. Now it's a time to announce the champion of Koti Chennaya Trophy 2023. It's young friends Urwa. I request the captain and all the players of Young Friends Urwa, please come forward and collect your very attractive winners trophy, the Koti Chennaya Trophy, which is proudly organized by Koti Chennaya Seva Brigade, registered Mangalore under the great leadership of Kiran Kumar Kodikal. The cash prize of 1 lakh. Young Friends Urwa with a 3-4 experienced player, along with the youngsters, they are really upsetting the big teams in the era. Yes, in this particular tournament, Koti Chennaya Trophy 2023, and the mega final looks like they will going to lose this match, but they bounce back very strongly, and they goes on to win this Champions Trophy. Koti Chennaya Trophy 2023. Yes, celebration begins. Celebration begins and firework yet to start. It's a late night, so that there is no firework. But they will going to celebrate this victory for, for long days. Now it's a time to announce Sandeep of Sai Electricals did a fantastic job and provided a very good sound systems and looking after each and every aspect of this Koti Chennaya Trophy 2023. My request, Sandeep, please come forward. Chappale Barle Beko. Sandeep is a cricketer, the fantastic fielder as well. And big hand for Sandeep. Thank you very much, Sandeep, for your cooperation for the success of this wonderful cricket tournament, Koti Chennaya Trophy 2023. I request Manik. The Manik, please come forward. And I request Swastik in the scoreboard, did a great job. Swastik, please come forward. Scoreboard. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
did a great job in the scoreboard and as the scorer. Thank you very much, Swastik, for your cooperation. Thank you. I request Manik, please come forward. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. V424x7 ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ತಂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. Thank you very much, Manik, for your cooperation for the success of this cricket tournament. Did a great job. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, Kiranana. It's over to Rakesh. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.